I guess we should start now. So, thank you everyone for being so patient with us. And hello, everyone. A very good noon to each and everyone who is present over here. And welcome to this Close Circle webinar, an initiative by the founder of Chronicle Advisors, CS Abhinav Agarwal, sir, who is joining with us. So, as we all know, that what our today's topic is all about dematerialization of shares. And to enlighten this more, today we have our esteemed faculty, CS Neeraj Khatri, sir. Let me brief him about you. He is a corporate and international business advisory professional with 13 plus years of experience in cross border investments, FEMA advisory, FDI and ODI, international market entry strategist, and strategic business consulting. Experience in handling complex matters involving RBI, MCA, FEMA compliances, international collaborations for global growth. Knowing for providing advices to Indian and foreign businesses on entity setup, cross border transactions, compliance oriented solutions to startups, SMEs, MNCs, and international investors seeking seamless entry and expansion in India and overseas market. So I heartily welcome you, sir. Uh, CS Neeraj Khatri, sir. Hey, thank you, Neeraj, we Radhika. welcome you. And sir, Thank, Thank you for sparing your time. And yes, good afternoon. I believe it's good morning to everyone, right? And yes, we are back again with this webinar series. And the intent has always been to share the knowledge and to keep growing together, right? And the very important topic today we have, that is dematerialization of shares. I believe we have faced a lot of challenges from last couple of years. Earlier, it was on the unlisted company, right? Then the private company also came under its ambit. So definitely there's a lot of insight and introspection which need to be done. And I believe none other than Neeraj ji is there to sail us through this complete domain. Right. So without taking much time, I hand over the podium to Neeraj ji. Neeraj ji, looking forward to your insightful discussion on the same. Over to you, please. thank you, Abhinavji. So I just present my presentation. Is it visible? Yes, it's visible. Okay. So particularly, I named this topic to the topic is divided into two parts. First is the ISIN and second is the DMAT. Particularly for the global investors and for the wholly owned subsidiaries or subsidiaries, because for domestic it is quite easy. However, I'll cover the domestic ones as well. So I'll take you one by one. So I represent Neeraj Khatri and Company. Okay, so I have founded this in 2026, and I have clients across 4 countries and 12 plus clients and Asian Alliance members in US, Europe, China, Hong Kong, Japan, and Singapore. And in other countries, I'm also targeting to move ahead. Now, just allow me a sec. So my services are business advisory and setup. So in business advisory, there comes two parts because we are now moving to the globalized centers. So I cater to the business intelligence service as well and the business advisory. Now, what do I mean by business advisory for the young professionals as well? That we are doing very traditional practice, and when the clients comes and says, okay, we want to set up a company, we'll just say, okay, we'll do the private LLP, whatever you want. We don't advise them what sort of a setup is required, and for that advice and for that memo we'll provide those services as well. First we'll cater to the advisory and then we'll move ahead to the last point, that whether you want to set up, whether you want to JV, whether you want a business partner, etc., or a business matchmaker. Second comes as a business intelligence. Now sometimes the foreign counterpart comes to you and says, okay, we have shortlisted 2 centers, and apart from that we want to go ahead with the one nation, like they have selected Vietnam and India. So what do you suggest, which one is the best? So that is known as a business intelligence on the product. Apart from that, tax services, merger acquisitions, intellectual property, due diligence, HR, payroll, global mobility, EOR services. Now,
I am having an experience of approx 13 years in the corporate secretarial matters, and I've worked with various corporates, including white label, IT companies, and finally to consulting and then to my own uh, company, corporate practice. Now, my area of specializations are corporate advisory, regulatory compliance, FEMA, and NBFC advisory like setup, change of the directorships and shareholding, cross-border swaps, etc. Now, today's topics table of contents are Indian capital market number one, an overview, Eisen explanation, Demat account operations, case studies, challenges, and best practices, and thereafter, question and answer. Now, I'll take you just like a spoon feeding thing because some of us are not doing this sort of this line of practice of Demat. So, for them, I have tried to make as easy as possible, and also I give them an overview, how the global market works and why does this need of dematerialization of shares arises on suddenly. So let us start. What is the Indian's capital market? So I'll give you an overview. So Indian capitals market are having a market cap of $4 trillion. Okay, and there are more than 7,000 plus listed companies in BSEs and NSEs as per the latest data. 90 million accounts, Demat accounts. And I'm not too sure about the active accounts, but there are more than 90 millions. So recently I went to a seminar by representing. So I came to know that there are going to be more than 100 within this year. Now there are key market regulators, that is SEBI, that everybody knows, RBI also because of the foreign cross border, MCA, who is our core. Key market infrastructure, BSE, NSE, two major stock exchanges, NSDL, CDSL, Central Depository Managing Electronic Securities, clearing corporations who settles and risk managements, RTAs, who hold your shares in the Demat forms and assist you getting the ISIN. Now, first we'll move ahead. What is ISIN? Okay, global identification and allocation. Understanding the international standard, why it has been brought into the picture, that it identifies uniquely every security traded across the global financial markets. Now, an international securities identification number, that is ISIN, is a 12-character alphanumeric uniquely identifies a financial security such as a stock, bond, ETF, or mutual fund at a global level following the ISO 6166 standard. These standards are, told by this European markets. So, what was the need to be ISIN to be created? Before the ISIN standardization, each country used its own national numbering system, creating significant friction in cross-border trading and settlement. Because पहले क्या होता था कि पहले भी हमें क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट तो करनी होती थी, लेकिन उसका कुछ रूट कुछ अलग होता था. देयर आफ्टर उसको ग्लोबलाइज बनाने के लिए और उसको इजी करने के लिए आइजन इंट्रोड्यूस हुआ. द आइजन स्टैंडर्ड गवर्नड बाय द एसोसिएशन ऑफ नेशनल नंबरिंग एजेंसी ANNE ensures every security has one universally recognized identifier regardless of where it is traded or settled. पहले कोई सिक्योरिटी 200 years बैक आपने कहाँ पे सेल की क्या किया किसी को पता नहीं होता था. Nowadays, if anybody wants to find out कि सिक्योरिटी कहाँ ट्रेड हुई है कैसे हुई है, then you have a specific number particularly for that. Also, if somebody case against you and the case goes for the arbitration in the Singapore, or so you have a right proof to identify your security. This was my security and I have traded, or to grab the unusual market practices और उनको साइड करना. Now, what securities have ISINs? Number one, equity shares, listed or unlisted. After this rule 9B, unlisted as well comes under the ambit of this. Corporate and government bonds, exchange traded funds, mutual fund units, derivatives and structured product, commercial paper and debentures. So every entity issuing these sort of securities, every mutual fund first have to get the ISIN. Now, if you have, say, equity shares you are issuing for a private company, then you have to take an ISIN. Now you are saying, okay, I want to issue a preference shares. So the same ISIN cannot be used. You have to go for another ISIN. You want to issue a commercial notes, debentures, then for different things, different ISINs to be used.
One ISIN is for one particular security, not for everyone. In India, ISINs are assigned by two depositories, that is NSDL and CDSL, which serves as the national numbering agency for India under the ANNA framework. So under ANNA, there are various countries who are registered. So India is also registered under that. Now we understand what is the structure of ISIN. An ISIN is structured into three distinct parts, each serving a specific identification and validation purpose within the global securities ecosystem. The one is the country code. So it is very easy to identify which countries securities are traded, which country securities you have bought. So based on the ISO 3166 standard, this identifies the issuing country, example IN for India, US for United States, GB for United Kingdom, and same as for other countries. The country code anchors the security to its jurisdiction to find out whether it is coming from that jurisdiction or not. Now, second is the national security identifier, 9 characters. After IN, there are certain characters are used. So that is known as national security identifier, particularly by NSDL or CDSL. This portion distinguish each specific securities issued by a company or entity, ensuring no two securities share the same course, which I was telling you before. For particular security, you have to go for a particular ISIN. Now the third digit. So third digit is basically known as the Lewin algorithm. So it is a technical thing for the ITs and the deposit under the depository act as a validation tool to detect data entry or transmission error. It ensures the integrity of the ISIN across electronic systems globally. So you can see the example, how the ISIN has been managed. Now moving ahead, why the ISIN matters. So I have already told you universal identification. Second is the regulatory compliance. So you can do the regulatory compliance by punching your eyes in. Whether if you are going for any off-market sale for a private company or getting your shares dematerialized, you have to have an ISIN number first. Corporate actions, faster settlement, portfolio management, because sometimes the FPIs on the global investors comes, wealth managers and fund administrators rely on ISIN to accurately track holdings. So it will be easier for them to, track the holdings and calculate NAVs, reconcile position across custodian, primary brokers, etc. Transparency and audit trail. So this was the major thing. That's why, this Rule 9B has been brought into the picture, that a consistent ISIN creates an unbroken audit trail from issuance to settlement, strengthening market integrity and supporting anti-money laundering surveillance. So you have to understand that Rule 9B is not only about just getting the shares dematerialized. The intent behind it is that you have to create an audit trail, consistent audit trail. If you go for the valuations and have you hold it the right securities, because what happens in physical form, there are high chances of forgeries, which was happening prior to 2023 for many companies, not for the small companies. Still, some small companies are doing that. But for many global companies, to curb that, what happens now, there are two shareholders of a wholly owned subsidiary. One is the company, one is the nominee. Now, the nominee has resigned from the company for certain reason and they have not changed it. Now that's create a very unique situation and a very chaotic situation for the companies. To avoid that, you require certain documentations at the other parts. And to avoid that, that's why this thing has been brought into pictures. If you talk about the regulatory compliance, regulator exchange depository worldwide require SIN for reporting, clearing, and compliance, including MIFID and Europe and SEBI mandates in India. Corporate actions like dividend, bonus, right issue offerings, mergers, and all are processed using ISIN as a primary reference, ensuring investors receive correct entitlements. It doesn't sound like, we are issuing the preference shares in the equity ISIN. So that sort of things were happening. So that's why this has been brought into the picture. Now, how it has been allocated. So I hope that everybody knows how it has been allocated. We, dial the numbers of RTA and they will tell us the procedure. This is the BR required, etc., etc. So this is how the process is. Applier via RTA, right transfer agents.
RTA sends request whom to NSDL. Thereafter, NSDL reviews the documentations. If there is any discrepancy, the NSDL will tell you that provide another set of documents or correct the documents, and then ISIN will be activated after review of all the documents. Now there are two things to that I want to add and tell you. Sometimes you will be not okay with the documentations because they are asking too much. The reason behind that is they have to maintain more and more documentation to avoid the audited things. Now what happens in audit with them, every bankers and every DPs are being audited by this RBI, and the audits are very strict. So sometimes you feel frustrated, why क्यों इतने documents मांगे जा रहे हैं, we have provided all, सब मेल पे काम हो रहा है. आपके पर्पस से मेल पे काम हो जाता है, but they have to maintain the documentation part. प्लस कोई भी चीज आप साइन करके देते हैं, इट इज हैज टू बी प्रॉपर. अदरवाइज अगर आपके जैसे सिग्नेचर इधर है उधर है, दैट्स व्हाई द बैंकर्स विल टेल यू सर इधर नहीं इधर साइन करो, स्टैम्प हम खुद करेंगे. द रीजन इज दैट देयर आर ह्यूज पेनल्टीज फॉर नॉन मेंटेनिंग ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स. क्योंकि आपका काम हो गया, आपने आरटीए को दे दिया, but RTA plus DP plus banks, they will bear the huge penalties. That's why you will see if you go to the international bank for opening a Demat account of a private company, you will see the charges. There are more than 10 lakhs, 12 lakhs in the StanC or the HSBC, whichever you bank you will go. So that is why they are charging, because they are assisting you. Plus the documentation trial is very high on their side. Now in India, NSDL serves as the sole national number agency. Now in India, there are two agencies. Apologies for not writing, NSDL and CDSL. Earlier it was only NSDL. The process is initiated by the issuing company through its appointed RTA. Once corporate details such as PAN, SIN, authorized capital are verified, NSDL allocates the ISIN typically within 7 to 15 working days. So this is a TET after satisfying of the NSDL. It is not when you have punched the application. It is after they are satisfied. Okay. Also, sometimes because of the load and all, it might take 2 to 3 months as well, depending upon the load they have. Rightwise, in March 2024, when everybody was applying, to cater, because till the time you have to get to your ISIN and other things. So sometimes depends on the load as well. Further, a company may hold multiple ISIN if it issued different classes of securities. I have already discussed equity, preference, debentures, warrants, each receiving its own unique code. Now, moving ahead, ISIN allocation, key requirements and eligibility. Now, these are the documents required. I guess everybody is aware of, but still, like certificate of incorporation, memorandum, board resolution authorizing dematerialization, company spans and details of authorized issued paid up capital. Further, tripartite agreement with RTA and depository. They will every RTA has its own agreement. They will tell you. SEBI registration for listed companies, yes. Now, who can apply? Any company, listed or unlisted, now can apply. Public or private, intending to issue convert securities into dematerialized form must apply for an ISIN through RTA. Only RTA, via RTA you can apply. Important notes, each security class gets a separate ISIN. Foreign portfolio investor use the ISIN to access Indian securities. For example, FPI पे अभी काफी ज़्यादा चीजें आई हैं. That's why I put in the ISINs are permanent, they are not cancelled unless the security is extinguished. बहुत लोग ये कहते हैं कि हम पुराना ISIN कैंसिल करवा के नया इशू करवा लेते हैं, बट वो कैंसिल एक्चुअली में नहीं होता है. NSDL के साइट पे वो आपको बोलते हैं कि हो गया, यू हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स, बट इट इज नॉट कैंसल्ड, इट विल बी अलाइव. Demat accounts, structure, operations, and investor compliance. We'll discuss how electronic securities custody works in India, from account structure to regulatory obligation for domestic and foreign investors. So I am first giving you the brief of how the market is. Thereafter, we will go directly to the Rule 9B and Q&A. I understand there are a lot of Q&As considering this who are dealing with the wholly owned subsidiaries. The first we have to understand from a baby's perspective what is Demat and all. Then we can move. Now, a Demat account, short for dematerialized account, is an electronic repository that holds securities.
equities, bonds, ETF, mutual fund units in Demat mode, and more in digital form, replacing physical share certificates entirely. Now, what is Demat account? Demat account is like a bank account. Okay. In bank, you will deposit cash or having money. The same way in Demat account, you have your securities in it. Okay. Now, the core purpose, eliminate physical paperwork. Every time if you have to sell your shares, you have to, do the SH4 things and other things. That is why it has come to, eliminate the most of the paperworks and everything is aligned. For example, if you want to see your certain securities in a private company if you have invested, now you have to call the person and say kindly send me the registers, kindly send me this that. Now if you have a demat account and the shares are dematerialized, what you can do is you just log in and download the statement and provide it whosoever the bankers ask or the people's ask. Enable faster error free settlement of trades, T1. Now the settlement is I guess T plus 1 in India. More probably this is going to be a T plus half day settlement, what I am hearing from the regulator, but still it is in process. Might be, let's see in the future. Reduce risk of theft, damage, postal delays. Now, what happens generally in private companies, the physical share certificates are getting lost. Okay. Now, to claim the shareholding, it has become very difficult where the cases are, pending before the Honorable Supreme Court or the High Court or the NCLTs. We have seen a lot of cases. Improve transparency and regulatory oversight of investors' holding. Now, we can understand, we can communicate with the courts that, these are the things and etc. It will take a bit of time. But what if we have a Demat account, it will be easier for us to, identify who is the actual holder of the share. And if the person is no more or the company is no more, then it comes to the question who is the legal heir of that shares, whom to transfer. So it will be become very easy to more on a easier side to cater to those needs. Now, India's two central repositories I will discuss. The first is the NSDL. It is the largest, older, and preferred because when the Rule 9 became, everybody was saying the get the ISIN from the NSDL. Thereafter, CDSL has also started. The second one is CDSL, of course, widely used by retail and new investors. Now, NSDL has a tie-up with the big bankers across India. CDSL is widely used for this fast and specific purpose, so you can go accordingly. There is no restriction that you have to go with the NSDL or the particular with the CDS. It's completely your choice. Thereafter, investors cannot open accounts directly with NSDL or CDSL. All accounts are opened through a licensed depository participants. Now, what happens? What is mean by that line is that when we are opening a Demat account, so Demat account is can be holded by an NSDL. We can log in it. There is a speed portal provided by NSDL, but you cannot apply in the NSDL. You have to apply via a bank. Bank is your depository participants. It's just like a platform. The bank is the platform who will share your documents to the NSDL or the CDSL. Then they will review the document, open the accounts, give you the credentials, and then you can log in. However, any transactions going through the NSDL portal or CDSL portal will be routed through banker, whosoever is the banker, like ICICI, Kotak, whosoever, in the IDS portal. There is an IDS portal. I will share you the link as well for that. So this is why this depositories played a very vital role managing these sort of transactions. Now, what is the role of a depository participant? A depository participant act like a bank for securities, like I have already discussed. Just as bank holds your money electronically, a DP holds your share, bonds, mutual funds, and other securities electronically in your Demat account. Like DP credits purchase shares to your Demat account upon settlement, typically T plus 1 basis. Selling of shares if you want to sell shares off market, on market. Dematerializations like converts physical into share certificate into electronic holding. Corporate actions like dividend, bonus, right entitlement, stock splits are automatically credited to the Demat accounts. In essence, DP are the frontline interface between investors and India's depository infrastructure. Every investor, retail or institutional, domestic or foreign,
must work through a SEBI registered DP to access India's capital market, which I have already discussed. Now, key functions of a depository participants: account opening, opens Demat account for all types, individuals, NRI, FPI, corporation, HUF, trust, with full KYC verification, of course. Dematerializations that we are discussing. Rematerialization, although it is not of need now, but still I'll tell you, converting electronic holding back into physical certificates from upon investor request. It is rarely used nowadays, but in some cases, 100 out of 1, whereby a case has been stuck in the NCLT or particularly required that sort of requirement, then only it is used. Otherwise, it is not used in anywhere. Settlement and transfers, they will settle, facilitate transfer of securities for buy sell transaction through the exchange clearing mechanism, ensuring accurate T+1 settlement. Pledging of securities, marks as a shares as pledge when used in a loan collateral. Now, this is also very interesting. So, whenever you are pledging your shares through to a bank, so the bank will ask you, kindly provide me a statement. However, in terms of submitting the physical share certificates, bank often require certain certificates extra, and sometimes tell you to get your accounts dematerialized first, and then you can pledge your securities. Generally, it is happening in the listed companies, shares of the listed companies, not in the private companies. But in some cases, private companies are also pledging their shares to take loan and to run the businesses. Corporate actions ensures every investor receive dividends rightly, entitlement, bonus shares, other corporate action. Also, they will verify investor identity, KYC, and compliance. So, this is the most important, governed by PMLA, FATF norms. Because, see, we are only focusing on Rule 9B. But Rule 9B says कि आप डीमेट करा लो. ये they are not saying कि कैसे करा लो. कैसे करा लो में आता है डिपॉजिटरी एक्ट एंड अदर एक्ट. बैंकिंग एक्ट आता है, ये अदर एक्ट आते हैं. तो दीज एक्ट आर रन बाय द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सेबी एक्ट्स, आरबीआई एक्ट्स. So accordingly, they will take your KYC. It is not same as the MCA KYC. It will be according to the depository KYC. तभी वो आपसे बोलता है कि ये डिक्लेरेशन दो, वो डिक्लेरेशन हो. Because there are two process. The one is the external guidelines provided by these, PMLA, SEBI, or the second one is the internal guidelines. Now, why they have this internal guidelines? Number one, इंटरनल गाइडलाइंस जो होती हैं वो आरबीआई के साथ कंसेंट लेके या कोई बड़ी अथॉरिटी के साथ कंसेंट लेके ही बनाई जाती हैं. मोस्टली बैंक्स में सेम होती हैं. However, some banks prefer कि ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, like documentation wise. If you go with the international bank for opening an account, I am giving you just an example with HSBC. Now, HSBC will ask you to provide documents in electronic form, the digital signed and others. However, if you go with a domestic bank, they will say कि नहीं सर हमें तो सारे hand signed documents चाहिए. So every regulations and the internal guidelines are made with the consent of the अथॉरिटीज कुछ को कहती हैं आप ऐसे कर लो, आप ये कर लो. बिकॉज इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऑलरेडी अकाउंट्स होते हैं ओवरसीज में, उनका केवाईसी होता है. देन दे विल से कि हाँ भाई ठीक है, आप इंडिया में एक काम करो, हमें ऑनलाइन प्रोवाइड कर लो. बाकी सारे प्रोसेस सेम होंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस विजिट सेम होगा, ईच एंड एवरीथिंग, बट द डॉक्यूमेंट शुड बी इन दिस. सेकेंड थिंग, आपके आईटी सिस्टम्स कितने स्ट्रांग है, whether your IT systems have right tools to verify, like opening of the account via digital signatures, etc., etc. So ये सारी चीजें भी देख के इंटरनल पॉलिसीज बनाई जाती हैं. सो जो भी चीजें रेगुलेट होंगी वो दो चीजों से रेगुलेट होंगी, एक एक्सटर्नल लॉज हैं आपके और एक इंटरनल पॉलिसीज हैं. जब आप बैंकर्स को जाके बोलते हो ना कि सर ये कहाँ लिखा हुआ है कि हमें ये सर्टिफिकेट देना है, तो द रिलेशनशिप मैनेजर डजंट हैव आंसर, बट द कंप्लायंस टीम हैज एन आंसर कि सर ये इंटरनल पॉलिसी है. वो उनके पास रिटर्न पॉलिसी होती है दैट यू हैव टू आस्क सो एंड सो डॉक्यूमेंट, दिस इज द एसओपी इज देयर. नाउ मूविंग अहेड, ग्रेवियंस हैंडलिंग. अगर कुछ भी हो जाता है, शेयर्स कम ज्यादा होते हैं या क्रेडिट नहीं होते हैं, so you can raise your complaints, coordinate SEBI scores, so everybody knows that. Now, who can be a depository participant? SEBI allows following categories of entities to register as a DP, subject to the strict eligibility norms, capital adequacy requirements, and operational standards. Commercial banks हो सकते हैं,
पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं, कस्टोडियंस होते हैं लाइक HSBC, डोशे बैंक, सिटी बैंक, NBFC मीटिंग कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, NBFC भी कर सकती है। सो जो भी सेबी अलाउ करेगा। Now, mandatory requirements for DP: obtain SEBI registration as a DP, enter into a formal agreement with NSDL or CDSL or both. किसी के साथ भी आप जा सकते हो। नेटवर्थ है 50 to 1 CR डिपेंडिंग अपॉन एंट्री टाइप, ये शायद इंक्रीज भी हुई है। Comply with the ongoing audit reporting inspection requirements. That what I was telling you. कि it is not just that Companies Act comes into play. It comes with the NSDL internal guidelines and other guidelines. So why I'm giving you this 360 व्यू ऑफ दैट, बिकॉज कभी कभी हम ना स्टक हो जाते हैं कि यार हम तो पूरा डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं फिर भी क्यों नहीं खुल रहा है अकाउंट, काफी सारी चीजें बॉटल नेक क्यों बन गई है। वो इसीलिए दे हैव टू लुक एट फ्रॉम द 360 व्यू एंड फ्रॉम द ऑल पर्सपेक्टिव्स, नॉट जस्ट फ्रॉम दैट आपको अकाउंट खुलवाना है तो आपने अकाउंट ओपन करवा लिया। देर आर मेनी मेनी गाइडलाइंस विच आर एप्लीकेबल टू देम एंड द पेनल्टीज आर वेरी ह्यूज ऑन देम। एक भी अगर ऑडिट्स वगैरह में आपका कोई मार्क आ जाता है या कुछ वो कंप्लेन्स आ जाती हैं, देन दे हैव टू पे अ ह्यूज पेनल्टी। सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव पेड $5,000 बट देयर एंड अप पेइंग $50,000 एज अ पेनल्टी, तो उनके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। सो दे विल एंड अप bearing the heat of the authorities. Now the regular legal and regulatory framework: Depositories Act enable electronic holding, DP, SEBI DP and registers governs DP operations, कंपनीज एक्ट मैंडेट्स डीमैट। कंपनीज एक्ट बताता है कि ये मैंडेटरी, आप अपने हिसाब से करवा लो जिस एक्ट में भी एप्लीकेबल है। फेमा अगर क्रॉस बॉर्डर है, फेमा आ जाएगा। PMLA और AML कंप्लायंसेस जो बैंक्स और इनको फॉलो करने पड़ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट इम्प्लीकेशंस तो ये बाद में आता है व्हेन यू सेल द शेयर्स लाइक TDS एंड अदर थिंग्स, बट द मेन आर द 5 ones. Key entities and their roles. So the SEBI first, the apex regulator of India's securities market. SEBI sets rules for all market participants. SEBI rule बनाता है DPs के लिए, डिपॉजिटरीज के लिए, एक्सचेंजेस के लिए, लिस्टेड कंपनीज के, एंड फोर्सेस इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, मार्केट इंटेग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मॉडल्स। RBI governs the foreign investment flow, भले भले चाहे FPI हो, NRI हो, foreign body corporate हो, Demat holding securities, comply with the RBI prescribed investment limits, reporting, repatriation formats. NSDL and CDSL, the two central custodians of all dematerialized securities in India, they maintain the master records of all. कभी आपने देखा होगा इफ यू आर इन्वेस्टिंग तो आपको एक CDSL या NSDL की रिपोर्ट आती है होल्डिंग की इन अ क्वार्टर और इन अ मंथ। यार ये आपकी सिक्योरिटीज हैं, इस मंथ 10 लाख की थी, नेक्स्ट मंथ 8 लाख की हो गई, 2 लाख आपने बेच दिया। इर्रिस्पेक्टिव कि आपका जो जो भी प्लेटफॉर्म है, जेरोदा है, ग्रो है, वो क्या देता है आपको, दिस विल टेल यू द एक्चुअल थिंग कि आपकी ये सिक्योरिटीज इस प्राइस में गई हैं और अभी बैलेंस आपका ये पड़ा हुआ है, ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट जैसे बताया था, सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट, बैंक हो गए, ब्रोकर्स हो गए, दोज हु आर अलाउड टू ओपन दिस डीमेट अकाउंट्स एंड ऑल। राइट ट्रांसफर एजेंट्स आर बेसिकली द ऑफिशियल रजिस्ट्रार ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ इशूइंग कंपनी। जनरली जैसे कोई कंपनी डीमेट कराने आइजन लेने जा रही है तो वो जनरली वाया RTA ही जाएगी, बिकॉज दे मेंटेन द रजिस्टर्स। ओके, जैसे आपको कुछ बैंक पोस्ट चाहिए या कुछ चाहिए, सो दे विल प्रोवाइड, ऑल दो यू कैन हैव अ डायरेक्ट लिंक विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और द बैंकर्स, सो दे कैन प्रोवाइड यू, बट RTA को भी आप बोलोगे तो होगा। Issuing companies must facilitate dematerialization of securities, appoint RTA, execute tripartite agreements, and under Rule 9B, ensure all private company shareholder hold securities exclusively in Demat form. This will be discussed in detail because there are lot of questions, but the answer lies in the whole rule. Okay. Now flow and operations. Okay, dematerialization of shares. First, you have to submit the documents. Thereafter, DP verifications comes in. Depository intimation, RT confirmation. This is how dematerialized things happens. The dematerialization process transforms physical share certificates into electronic holdings, a structured multi-party workflow. I'll explain you over the cases. अभी हमें दिख रहा है कि सिर्फ हमें शेयर्स को डीमेट कराना है। ओके, सो इन इंडियन कंस्ट्रक्ट इट इज वेरी इजी।
लेकिन जैसे ही आप उसको फॉरेन कंटेक्स्ट में जाओगे ना, इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, and sometimes you don't have the answers. I'll tell you with my practical examples which I have faced, and it is very very difficult to get the demat of certain companies which are investing in India. So I'll tell you how. Physical certificates are permanently cancelled and destroyed once the electronic credit is confirmed. So वो destroy नहीं होते हैं, वो आपको revert कर देते हैं by marking the cancelled. जो भी DP होगा वो आपको वापस भेज देगा. The entire process typically takes 15 to 30 days from submission depending upon the responsiveness of RTA. 15-30 days तब है जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स पंच कर देते हो. पंच करने के बाद दे विल रिव्यू, काफी ज्यादा Q&As होंगे, ये क्या है वो क्या है. आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स. ग्लोबल में ज्यादा नहीं होता बिकॉज ग्लोबल में आपका आधार और ये अदर चीजें ऑथेंटिकेट कर देती हैं, जो कि PMLA गाइडलाइंस के अंदर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है. Now take an example. If I want to open a Demat account, it will hardly take 2 days, not more than that. There should be no audit trail, nothing. Why? Because I am having an Aadhaar. मेरे सारे जो आई है, रेटिना है, थंब इम्प्रेशंस है, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कौन से इंस्टीट्यूट के साथ हूँ, वो सब कैप्चर हो जाता है. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन इंडिविजुअल्स, उसने तो पासपोर्ट दे दिया है, KYC दे दिया है, तो उसका तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है इंडिया में. टू मेंटेन दैट रिकॉर्ड, दैट्स वाई इस 15 to 30 days का उसको टाइम लगता है टू रिव्यू इट, टू चेक इट. बैंकर्स के बाद भी कभी कभी कंफर्मेशन जाता है, जैसे सिटी बैंक्स में उसका बैंक अकाउंट है, बिकॉज वंस यू आर ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट यू हैव टू पंच योर सेविंग अकाउंट्स टू व्हाट्सएवर अकाउंट. तो वो अकाउंट एक्चुअल में उस बंदे के नाम पे है या नहीं है. दैट इज वाई 6 पॉइंटर KYC कम्स अप वाया स्विफ्ट. तो बैंकर क्या करता है, दे हैव अ चैनल नोन एज स्विफ्ट. जैसे मैसेजिंग सिस्टम होता है, व्हाट्सएप होता है, तो आप ऐसे मान के चलो कि बैंकिंग का अपना एक व्हाट्सएप होता है नोन एज स्विफ्ट. बैंकर्स यहाँ से लिखते हैं कि काइंडली प्रोवाइड कि ये हमें हमारे पास KYC के लिए आया है, कब से बंदा आपके साथ रिलेशन मेंटेन कर रहा है, क्या नाम है, कैसा है, कुछ एक सर्टिफाई करके आप दे दो. द बैंकर्स ऑन द अदर साइड विल रिसीव दिस मैसेज एंड दे विल टेल यू द डिटेल्स कि इसका डेट ऑफ बर्थ ये है, इसका नाम ये है, ये यहाँ से बैंकिंग करता है, ये करता है. 6 पॉइंटर KYC उसको बोलते हैं, एवरीबडी नोज दैट. देन इट विल गो टू द बैंक. नाउ द बैंक वेरीफाइज, अच्छा ठीक है हमारे पास KYC आ गया, now it is everything is fine. Then they will start the process. So you have to understand the communication channel is very big when we are talking about the global investors, including the FPIs. There are a lot of bottlenecks still now when they are trading on the shares and alls. You can ask various DPs who are not. I'll take the name of one of the DPs that I am discussing with. That is Orbis. So वो करवाते हैं, but the processes are straight away. But the documentation part still a bottleneck for the many foreign counterparts. Now moving ahead, the most important recent and emerging changes Rule 9B. Although it is not recent, but yes, it was mandated. So what is Rule 9B? Now 9B कहता है कि लिस्टेड कंपनीज तो ठीक है भाई, डीमेट कराएंगी, अब प्राइवेट कंपनीज को भी कराना पड़ेगा. Those who are not falling under the ambit of small companies definition or the government companies. Now, इसका एक और exception भी है, that even if you have a 1 rupee of shareholding, but the company is holding an subsidiary, that is an exception. तो वो small companies के ambit में fall नहीं करेगी. Still, you have to go for the dematerialization. Now, what was the intent behind mandating this Rule 9B? I'll tell you the practical reasons and the reasons which are available in the ऑनलाइन मार्केट्स एंड ऑल. ऑनलाइन मार्केट्स ये कहता है कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और इजी चाहिए था, फॉर्जिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से हम रूल 9 भी लाए हैं और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं. बट एक्चुअल रीज़न इसका ये है, इफ़ यू टॉक टू द रेगुलेटर्स लाइक बैंक्स एंड ऑल, तो बैंक्स ये कहते हैं, जब भी जैसे आप जाओगे, आई एम टेलिंग यू माई पर्सनल एग्जाम्पल. So we have a company incorporating, एक company incorporated थी, we have given the bank account to HSBC. अब there were 6 layers of शेयर होल्डिंग, कि A होल्ड करता है B को, B C को, C D को, D E को, और E F G H I को ऐसे करता है होल्डिंग. सब फॉल कर रहे हैं 10% से ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है. बट फाइंडिंग आउट द नेचुरल पर्सन इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, दो द कंपनी इज नॉट लिस्टेड. अगर आप PMLA की गाइडलाइंस में देखोगे तो बैंक्स ये कहते हैं कि यार हम 4
लेयर्स के बाद ना हम अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, हमारी इंटरनल गाइडलाइंस बिल्कुल मना करती हैं। तो आपके हिसाब से तो आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, आपको तो इजी लगता है कि यार वील गो एंड ओपन दिस बैंक अकाउंट। बट व्हाट हैपेंस ऑन द बैंकर साइड? बैंकर विल से कि यार 4 लेयर्स के ज्यादा हैं, तो वी हैव टू सी विद द कंप्लायंस टीम वेदर वी कैन ओपन इट और नॉट। And HSBC have categorically denied that we cannot open because under the PMLA we cannot, 4 layers से ज्यादा हैं। दूसरा, when we go with the domestic banks, they will easily say कि we will open, but you have to appoint an SBO. Now, what is an SBO? Senior Beneficial Officer. Now, this guy will be the whole and soul. Now, if there is a company जिसकी 100 लेयर्स हैं, जिसमें आप इंडिविजुअल पता नहीं लगा सकते कि कौन एक्चुअल शेयर होल्डर है, लास्ट में कौन होल्ड कर रहा है, बिकॉज यू हैव सीन बहुत ट्रिकी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रिकी बनाए जाते हैं कि लास्ट इंडिविजुअल तक नहीं पहुंचा जाए। तो उस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए बैंक्स ये कहते हैं, डोमेस्टिक बैंक्स, कि आप एक एसबीओ अपॉइंट कर दो। एसबीओ मीन्स नीरज खत्री अगर एसबीओ है, तो अगर कंपनी में कुछ भी होता है, पीएमएलए की गाइडलाइन मिस होती है, कुछ भी होता है, तो नीरज खत्री विल बी रिस्पॉन्सिबल, नो अदर पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल irrespective of the share holding। तो दिस इज द वे आउट दे हैव टेकन। सो जनरली आप देखोगे एसबीओ काफी ज्यादा प्राइवेट कंपनीज में, जैसे ट्रस्ट वगैरह आते हैं फॉरेन के, वो इंडिया में कंपनीज बनाते हैं प्राइवेट लिमिटेड फॉर द कॉस्ट सेंटर्स एंड ऑल, वो ऐसे ही करते हैं कि आप ठीक है, आपके ट्रस्ट में 200 लोग हैं, 200 का केवाईसी हम नहीं कर सकते, आप 2 का केवाईसी दो, बट यहाँ पे आप किसी को एसबीओ बना दो, सो दैट कि कोई एक्चुअल इंडिविजुअल को तो पकड़ा जाए कि अगर कल को कुछ होता है। बिकॉज अगर कल को वो बंदा वाइंड अप करके चला गया, कुछ टैक्सेस ड्यू रह गए या कुछ इफ एंड बट हो जाता है, सो द अथॉरिटीज विल कैच हुम? नोबडी। वो तो पूरा बाहर चला जाएगा। कॉम्प्लायंस प्रोफेशनल पे आप बोल नहीं सकते, वो कहेगा मुझे डॉक्यूमेंट्स आए थे, ऑथराइज नोटराइज अपोस्टाइल थे, आई कैन नॉट डू दैट। वो सारी चीजें वो सॉर्ट हो जाएंगी। तो उस चीज से बचने के लिए और एक प्रॉपर सिस्टम लाने के लिए गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई ठीक है, आप डीमेट खुलवा लो। अब डीमेट खुलवाने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि डीमेट में एप्लीकेबल होते हैं वेरियस वेरियस एक्ट्स, डिपॉजिटरीज भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, उनके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अलग हैं। वो आपसे कहेंगे कि ये केवाईसी ला के दो, अच्छा लेयर्स हैं उसका भी ला के दो, इसका भी करके दो, कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं। आप देखो, एक सिंपल प्राइवेट कंपनी 50 करोड़ की है या 60 करोड़ की कैपिटल है, उसके लिए बहुत ईजी है। बट आप सपोज करो कि एक शेयर होल्डर है जिसने सेफ का एग्रीमेंट किया हुआ है, सिक्योरिटीज फॉर फ्यूचर इंटरेस्ट। अब वो सेफ को जब वो लेने के लिए आएगा या रिडीम करने के लिए आएगा, तो उसको डीमैट ओपन करवाना जरूरी है। बिकॉज पैसा तो बाहर जा रहा है, किसके अकाउंट में जा रहा है, कैसे जा रहा है, टू अटेन दैट, दैट इज वाई दिस रूल हैज कम। ये रूल पर्टिकुलरली आप ये मत सोचो कि हमारे पे कर दिया बहुत ज्यादा है। फॉर द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इट बिट्स इजी, for the foreign companies, it is quite tricky still nowadays. I will discuss with the examples, and अभी काफी ज्यादा लोगों के Q&As भी हैं that we are recently incorporated a company, so do we issue the shares in the electronic form or the physical form? So I will discuss that as well. So first we'll understand कि रूल कहता क्या है। सो आई वॉज जस्ट गिविंग ए ओवरव्यू कि अभी मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। आई एम नॉट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि एक्ट क्या कहता है। लॉ बना दिया, दैट इज डिफरेंट। एक रास्ता बनाना अलग चीज है, रास्ते पे चलना कैसे, क्योंकि गाड़ी वाले भी चलेंगे, साइकिल वाले भी चलेंगे, पैदल भी चलेंगे, सबको चलना है उसी रास्ते पे। तो चलना कैसे है, दैट इज द थिंग। मार्केट क्या सोचता है वो मैं आपको डिस्कस करने के लिए बता रहा हूँ। नाउ की ऑब्लिगेशंस क्या रहता है? प्राइवेट कंपनीज मस्ट डीमेटेरियलाइज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बिफोर इशूइंग न्यू वंस। तो ये जस्ट अ लेमैन में आई एम टेलिंग यू, बट स्टिल आई विल गिव यू द नुआंस की एक्चुअल में रूल 9 भी क्या कहता है। न्यू शेयर अलॉटमेंट मस्ट बी ओनली इन डीमैट फॉर्म्स। Share transfer required demat physical transfers are no longer permitted. Promoters, directors in KMP must hold shares only electronically. Biannually reconciliation filings. So हर चीज को ना एक एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड शेयर क्या होते हैं, बैक डेट से ट्रांसफर कर देते हैं लोग, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, टैक्स बचाने के भी काफी तरीके होते हैं कि अरे 1 तारीख हो गई, हमने तो बैक डेट से ही ट्रांसफर कर दिया था। बट वेन यू हैव द डीमेट अकाउंट, कैन यू डू दैट? नो। So to avoid these sort of transactions which were happening,
That is why the rule 9b have came. You have to understand what is the intent. It is not that bad, but the problem is faced by the investors is that how to open that. They are not denying. They are absolutely nobody is denying to open the Demat. Now there are two things why people are afraid of Demat now, still now. First, costing बहुत ज्यादा है. आप अगर आज की डेट में एक डीमेट अकाउंट एक मैं अपना खुलवाने जा रहा हूँ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन पिक एनी वन एक्सेप्ट द बैंक्स. बीट मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान, जेरोदा ग्रो, एवरीथिंग इज फ्री. But the moment I say I want an individual account for a foreign shareholder, you can ask the prices. They're not less than $2,000. Any bank. And even the bankers are charging between $6,000 to $8,000, including the domestic banks. The international banks have a different view to that. They are charging 10,000. And the annual maintenance charges are also 10,000. Now understand a private limited company coming from foreign land, investing its FDI, ओके वो छोटा सा बिजनेस अपना करना चाहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द एसएमईज, नॉट द बिग वंस. अब वो कह रहा है कि यार मैंने 1 लाख रुपए में कंपनी बनवाई प्रोफेशनल से और मैं महीने का लाख रुपए और दे रहा हूँ टू मेंटेन द कंप्लायंस इन ऑल. You are charging 12 lakhs for 12 months. Okay. Now you are saying me the government and the this bankers will charge me $20,000 for these transactions which have no relation to me. कि अगर मैं ही डायरेक्ट शेयर होल्डर हूँ, मैं ही डायरेक्ट ओनर हूँ, तो यार मैं $20,000 कैसे दे दूँ? देयर हैज टू बी सम अलाइनमेंट, बिकॉज फॉरेन कंपनी को आप छोटे ब्रोकर्स के साथ नहीं टाई अप कर सकते. दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज. दे विल आस्क यू क्वेश्चंस कि कौन है, क्या क्रेडिटेबिलिटी है. एंड द मोमेंट यू से कि वो आपसे ही कहेंगे कैन यू चेक विद द सिटी बैंक, कैन यू चेक विद द एचएसबीसी बैंक. द मोमेंट यू चेक विद द एचएसबीसी बैंक दे विल गिव यू विद हार्श रियलिटी दैट कि भाई $10,000 इसके हैं, $10,000 इसके हैं, और जब ट्रांसफर करोगे बीच में करोगे तो उसके चार्जेस अलग हैं. नाउ कंसिडर कि अगर बंदा राइट इशू कर रहा है बीच में और 10 साल तक अगर मान के चलते हैं कंपनी या कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉस्ट सेंटर है, तो 10 साल का खर्चा उसका $100,000 है unnecessary, which will be huge, which will impact your FDI with this rule. That's what you have to understand. That is the one thing I am telling you. And अब इसके बाद और भी चीजें आएंगी. Let us go with the rule first. What the rule says. So rule 9b says every private company other than a small company shall within a period referred to in sub rule 2 issue the securities only in dematerialized format, facilitate dematerialization of all securities. Please understand, facilitate dematerialization of all security. What does that mean? It means कि भाई कोई भी कंपनी होगी वही अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट करेगी, शेयर होल्डर्स खुद से नहीं जाएंगे. नाउ आप कहते हो यार मैंने आइजिन ले लिया लेकिन डीमेट डीमेट वो नहीं पा रहे, हम लोग डीमेट नहीं करवा पा रहे बिकॉज शेयर होल्डर्स नहीं आ रहे. तो डू यू हैव सम प्रूफ so that you can say कि हाँ हमने तो बोला था but they were not able to provide the document, that's why the dematerialization not happened. That is why this section specifically says facilitate dematerialization of all its securities in according with the provision of Depository Act 1996 and regulation. अब second provision पे आते हैं. A private company other than a small company which is on the last day of financial year ending on, please read, ending on or after 31st March 2023 is not a small company shall, here the word used is shall, comply with the provision of this rule within 18 months of closure of such financial years. Now take an example. अगर मैंने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉरेन सब्सिडरी आज की डेट में इनकॉर्पोरेट की है 22 मई 2026, तो क्या मुझे डायरेक्ट डीमैट में शेयर देने पड़ेंगे? द आंसर इज नो. रीजन आई एम सेइंग कि पहले जो शेयर्स होते हैं वो डीम्ड इशूड होते हैं. अब डीम्ड इशूड आपने ऑलरेडी शेयर इशू कर लिया, आपके पास आइजन तो है नहीं. सो व्हाट इज द वे आउट? द वे आउट इज यू विल इशू इन द फिजिकल फॉर्म ऑल द शेयर्स. Once you issue it, file the INC 20, etc., all the compliances, then you move ahead with obtaining the ISIN along with the preparation of the Demat account simultaneously. This is the structure you can follow and move ahead. Otherwise, आप नहीं कर पाओगे.
थर्ड कहता है एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेफर टू इन सब रूल मेकिंग एनी ऑफर फॉर इशू ऑफ एनी सिक्योरिटीज और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज और इशू ऑफ बोनस शेयर्स और राइट ऑफर after the expiry of the period referred to in sub rule 2 shall ensure that before making such offer entire holding of securities of its promoters directors KMPs has been dematerialized in according with the provisions of depository act. अब इसका मतलब क्या है? Why it is saying? Why does it say that? कहने का मतलब ये है कि आप 18 महीने के बाद जो भी सिक्योरिटीज इशू करोगे ना वो डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए, फिजिकल फॉर्म में आप नहीं इशू करोगे और आपके पास आइजन नहीं है ना, इट विल अट्रैक्ट ग्रॉस नॉन कंप्लायंस. Neeraj, sorry to interrupt you. Can you share the screen which you are reading just before this? Because the screen which we can see is recent and emerging changes, Rule 9B mandate. Yeah, is this the same screen? Yes, same screen, recent and emerging changes, Rule 9B. What is Rule 9B? This screen we are able to see, but not Yeah. which you were explaining. No, I was explaining the rule 9B. Okay. Okay. So The rule you 9B is okay. written. So this screen is as of now, this screen is Yeah, only. yeah. Okay. It is. Okay. It is the one. Okay. So I was saying कि आप सपोज कीजिए, आई गिव यू एन एग्जांपल कि आज अगर कंपनी बनती है 22 मई 2026 को, आपने अलॉटमेंट कर दिया फिजिकल फॉर्म में फॉरेन सब्सिडरी का, शेयर्स अलॉट कर दिए फिजिकल फॉर्म में, INC 20 फाइल कर दिया, पैसे पैसे आ गए, एवरीथिंग इज फाइन. अब अगला फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो रहा है 27 का, आपका पहला फाइनेंशियल ईयर है, वहां से 18 मंथ्स आप काउंट करो. उस 18 मंथ्स के अंदर आपका डीमेट ओपन हो जाना चाहिए, नंबर वन. अगर वो 18 मंथ्स के बाहर हो गया और फिर आप कहते हो कि यार मुझे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट राइट इश्यूज ये सब करने हैं, then it will become very difficult for you because it entitles the you know non-compliance. नंबर वन. नंबर टू, अब कभी कभी ये हो जाता है कि यार ये जो 18 महीने हैं इसमें मैं बीच में राइट इशू कर सकता हूँ फिजिकल फॉर्म में, और मैं बोनस या ये जो भी है सारी चीजें कर सकता हूँ, तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कर सकते हो. बट सजेशन है कि आप पहले करवा लो एंड देन डू दैट. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास 18 मंथ्स है, आप राइट इशू भी कर सकते हो, लेकिन 18 मंथ्स के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे कि आपको अलॉटमेंट करनी है न्यू शेयर्स का. दैट इज वाई डीमेट को आपको साइमल्टेनियसली लेना पड़ेगा. दैट इज वाई 18 मंथ्स हैज बीन गिवन टू यू विद अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच कि आप वो करें. नाउ मूविंग अहेड, दैट डीमेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन इंडिया. Precondition before any issuance, ISIN acquisition is mandatory. Promoter director holdings in Demat. अच्छा, there was a one more thing. A lot of people ask कि अगर कंपनी ने आइजिन ले रखा है बट शेयर्स डीमैट में नहीं है, दैट इज अ नॉन कॉम्प्लायंस. एनीवन हैव एनी व्यू ऑन दैट? Because I was dealing with a practical case and I came to know with a very interesting fact about that. So, Neeraj, as per my understanding, that as you were also explaining, that the responsibility of company is to facilitate to its shareholder to Hmm. help them to get their demat accounts. So, if Correct. company is doing its part, Hmm. and after that the company is not getting the details of shareholder, so I don't think so that it's a non-compliance on the part of company. But if Correct. company is not doing the facilitation, and then we can say that yes, it's a non-compliance on part of company. Absolutely correct. So for shareholders, there is no such any penalties and all. But company must ensure that they have acquired the ISIN. So companies first is ISIN, and companies have made some mails. Okay, this is the important process and mandatory process that we need to do, and you should have proofs, evidence that we have shooted the mails and floated the mails. Thereafter, we have not received any response because the regulator will come to you first कि भाई डीमैट में होना चाहिए, आपने कराया नहीं है, ये इतना टाइम हो गया आफ्टर 18 मंथ्स. तो यू शुड हैव ना कि सर हमने तो आइजन करा रखा था बट हमने शेयर होल्डर्स को बोला है वो फॉरेन में है, एंड ड्यू टू देयर authority and this technical things of notarization and apostolization we have not got the documents yet. So you should be very prepared for the responses in the coming days. You see this is going to be stricter and stricter.
what I'm hearing from this, authorities and all. So let's move on. Demat requirements for private limited companies in India, precondition before any new issuance. So any new issuance you are doing after 18 months, you have to have this biannual reconciliation that we have discussed. Now I'll give you a layman view why, demats are made in such a way that, that private limited also has to comply. I have also told you, कई बार क्या होता है, बहुत लोग केमैन आइलैंड्स और ये जो यहाँ पे हैं, यहाँ की कंपनियों के वाया आते हैं, एंड स्ट्रक्चर इज वेरी ट्रिकी. So the major bottleneck was to identify who's the shareholders. Now take me an example. Okay. I have opened a company in Cayman Island and I am investing in routing the money from a lot of countries to India. And nobody knows, how the structure has planned. Now to get the right person, कि यार actual shareholder है कौन? See, if there is a listed entity, foreign में listed entity, जैसे let's take an example, I have incorporated a company. There was a huge listed company. तो वहां दिक्कत नहीं है, वहां पे आप फाइंड आउट कर सकते हो ये बंदे हैं, इतनी शेयर होल्डिंग है, क्या है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनीज, जो आपके क्या कहते हैं ग्रे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको रोकने के लिए ये लाया गया है. However, people and the professionals are facing certain difficulties for getting it open from the foreign sites, even the FPIs as well. However, the government is making a bit easier for you as well in the coming days. बिकॉज क्या होता है कि जो डिपॉजिटरीज हैं जिनके पास आप अकाउंट ओपन करवाने जाओगे, जैसे ही वो सुनेंगे फॉरेन अकाउंट है एंड आप उनके पास आए हो, वो आपको हाई रेट कोट कर देंगे. रीजन इज दिस, क्योंकि बैंकर आपसे उससे डबल ही ट्रिपल चार्ज कर रहा है, बिकॉज बैंकर हैज ऑल द प्लेटफॉर्म्स एंड दे आर वेरी रेडी ऑन दैट टू ओपन दैट. उनके पास सारी चीजें, उन्होंने पहले भी किया हुआ है. So that's why they will charge you on a higher side. But for a small company, it become very difficult who are just a cost centers कि यहाँ है, रिसर्च कर रहे हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है, जो मोस्टली कंपनीज में होता है. आजकल आप जीसीसीज वगैरह देख रहे होंगे. तो इन सारी कंपनियों के लिए थोड़ी डिफिकल्टी है. बट फॉर बिग कंपनीज एंड ऑल, इट्स अ रूटीन थिंग बिकॉज दे विल से यू कि हाँ ये आप कर लो. Also for certain companies who are based out in Europe and other regions, whereby getting the documents notarized and apostille or consularized is very difficult. It will take months for them. So that is also has been taken care. अभी सारी चीजें डिस्कशंस में चल रहा है. आई एम डिस्कसिंग विद चेंबर ऑफ कॉमर्स विद फॉर दीज आइदर तो आप एक प्रोसेस बता लो, बिकॉज एमसीए कंपनीज एक्ट सिर्फ एक बताता है कि ये करना है, कैसे करना है, क्या करना है, और कितना टफ है या इजी है, उसके लिए हमें फिर दूसरे एक्ट्स में जाना पड़ता है. सो दैट इज वाई इट शुड हैव अ वेरी ट्रांसपेरेंट थिंग, दैट कि यार हमें ये बोलता है हमें यहाँ पे इजिली जाना है, ये सारी चीजें सबमिट करनी है, एंड डीमेट अपना ओपन कराना है, एंड उसको वैसे ही रखना है. Now I'll tell you one of the company recent example that one of the global companies was acquired. इंडिया में उनके सिर्फ 10 शेयर्स थे जिनकी वैल्यू थी 2200 रुपए. आई टेक द नेम फ्रैंकली, 2200 रुपए की वैल्यू थी. आई हैव डीमेटेरियलाइज्ड देयर शेयर्स, द इंडिविजुअल शेयर्स. तो द गाय वाज सेइंग यार इट इज हार्डली $20-25, बट द अमाउंट आई हैव पेड इज $23,000. आप समझ रहे हो, 2000 रुपए के लिए मुझे 23 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं. दैट इज द मेजर क्वेश्चन कम्स अप कि यार मुझे मेरे को तो अकाउंट की नीड ही नहीं है, मुझे तो बस 10 शेयर बेचने हैं. लेकिन जब आपको 10 शेयर बेचने हैं, यू आर फॉरेन सब्सिडरी इन इंडिया, देन यू हैव टू गो फॉर दिस रूट. अब 10 शेयर हो चाहे 1 शेयर हो, दिस इज द लाइव एग्जाम्पल व्हाट आई हैव सीन. एंड द फॉरेन इन्वेस्टर्स गेट फ्रस्ट्रेटेड ऑन दीज थिंग्स. Why so much amount of the, why so much compliances are there? ओके मैं अगर यहाँ पे रहता हूँ श्रीलंका में, मेरा घर लंदन में है, तो वहां पे डॉक्यूमेंट जाएगा, मैं वहां पे किसी को बोलूँ, जो भी आपकी स्लिप्स वगैरह जाती हैं, डीआईएस स्लिप्स फॉर ट्रांसफरिंग द ऑफ मार्केट शेयर्स, आई टेल यू. सो जनरली क्या होता है, जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक डीआईएस स्लिप मिलती है, दो दो स्लिप मिलती है, एक इंट्रा ट्रांसफर और एक इंटर ट्रांसफर. इंटर ट्रांसफर इस मीन्स कि भाई एनएसडीएल टू एनएसडीएल आप ट्रांसफर कर रहे हो. दूसरा होता है एनएसडीएल टू सीडीएसएल आप ट्रांसफर कर रहे हो. तो वो जो स्लिप्स हैं वो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाती हैं. आप बैठे हो श्रीलंका में, एड्रेस जा रहा है आपका लंदन में, वहां से आप मंगा रहे हो, साइन कर रहे हो. सो यू सी हाउ द टाइम इज गेटिंग वेस्टेड एंड वेस्टेड एंड वेस्टेड.
although it is a procedure. So procedure is clearly written in the depositories कि कैसे जाएगा, बैंकिंग रेगुलेशन में कैसे जाएगा, भाई हम तो वो फॉलो करेंगे. You are following, but at the end the person is facing a lot of difficulties, a lot of difficulties. That's why some it is good to catch the right person, but at the same time it's very costly. What I view on that. Now, I've already discussed, but still I'll discuss that pre 2003 only listed companies were required to hold and issue shares in Demat form. Private companies could still issue shares and transfer physical certificates. On October 23rd, NCA notified Rule 9B extending Demat requirements to private companies, excluding small government and certain startups. September 30, 2024, deadlines for promoters एंड केएमपीज ऑफ प्राइवेट कंपनीज टू डीमेटेरियलाइज. तो ये डेडलाइन थी. उसके बाद काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस हुई. उसके बाद डेडलाइन बढ़ाई गई. बट स्टिल मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव नॉट डीमेटेरियलाइज्ड देयर शेयर्स. पोस्ट जून जिनके ऊपर एप्लीकेबल है उनको कराना मैंडेटरी है, बिकॉज आप नॉन कॉम्प्लायंस से बेटर है कि आप स्टार्ट कर दें आज के आज डेट में. नाउ आई टेल यू इलस्ट्रेशंस कि कैसे वर्क करता है. Scenarios: ABC Private Limited has five shareholders holding physical share certificate and wishes to issue a new round of equity for a foreign venture capital fund. So generally startups में भी ये काफी ज्यादा है अभी. Step first: ABC must complete appoint. कोई भी आप नया shares issue कर रहे हो उसके पहले you have to appoint an RTA in the previous board meetings or whosoever. अप्लाई एन आइजीएन. आप आइजीएन जरूर अप्लाई करके रखो, क्योंकि हर मैंने जैसे ही बताया था कि हर इक्विटी और हर सिक्योरिटीज के लिए अलग आइजीएन होगा. साइमल्टेनियसली आप, होता क्या है, हमने आइजीएन अप्लाई कर लिया, वी विल सेट कि 3 महीने में आएगा, 4 महीने में आएगा, 5 महीने में आएगा. वी डोंट हैव टू सेट, वी हैव टू स्ट्रक्चर. आप साइमल्टेनियसली शेयर होल्डर्स को बोलिए और अपने जो आपके जो भी डीमेट करेंगे शेयर्स को, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, उनसे डॉक्यूमेंटेशन ले लीजिए. यहाँ आपका आइजिन चलेगा, साइमल्टेनियसली आप स्ट्रक्चर करते जाएंगे डॉक्यूमेंट को. तो क्या होगा, अगर आइजिन आपका 30 दिन में आता है और आपके 25 दिन में डीमेट के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो आपके दोनों प्रोसेस एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे. क्योंकि ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि पहले आपको आइजिन लेना है फिर डीमेट में जाना है. ओके, आप साथ साथ भी कर सकते हैं. आप आइजिन ले लीजिए, साथ साथ डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा दीजिए. Submit physical certificates for of course, without submitting physical certificates you cannot dematerialize your shares. Await depository confirmation of full electronic credit. Depository आपको कंफर्म करता है कि यार अभी हुआ है नहीं हुआ है. You will get a message and a mail. Thereafter you will allow new shareholders to foreign VC funds in a demat form. अब होता क्या है, न्यू स्टार्टअप्स में सारी चीजें हो जाती हैं, लीगल वीगल सब हो जाता है. उसके बाद सेक्रेटरी के पास काम आता है कि यार हमने ना ये पास कर दिया है एंड हमें ना इशू करने हैं शेयर्स, आप प्रोसेस देख लो. स- बहुत सारे स्टार्टअप्स में मैंने देखा, दे डू नॉट कंसिडर कंपनी सेक्रेटरीज टू प्रोवाइड देयर इनपुट्स ऑन दैट. बट व्हाट हैपेंस कि आफ्टर सारी चीजें हो जाती हैं, बिकॉज पहले आप उनको कमर्शियल दिख रहा होता है, एंड लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग, एंड आई एम वेरी thankful that lot of company secretaries are bucking up and guiding the board in a right way. अब मैंने काफी जगहों पे देखा, आउट ऑफ आई डोंट से कि आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 4 जगहों पे देखा है, दे विल फर्स्ट गो टू द कंपनी सेक्रेटरी कि यार भले एक दिन पहले मीटिंग है, मतलब मान के चलते 23 को मीटिंग है, तो 22 को आकर जरूर पूछेंगे कि यार हम ये इशू कर रहे हैं, क्या बॉटल नेक हो सकते हैं, कुछ आप बता दो. अगर आपने बॉटल नेक बता दिए ये हैं, दे विल डेफर द मीटिंग डेफिनेटली एंड देन मूव अहेड. वरना प्रीवियस प्रैक्टिस क्या थी कि यार हमारी मीटिंग हो गई है, लीगल वीगल से सब कुछ हो गया है, कमर्शियल सारे सेट है, 20 करोड़ आ रहे हैं, आप एक काम करो कि ये ना शेयर इशू करने हैं, सारे प्रोसेस स्टार्ट करो, बिकॉज दे डोंट नो द लॉ. नाउ अब वो आप उसको बोलोगे कि सर इसमें तो डीमैट खुलवाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो अपना सर पकड़ लेगा. बिकॉज इन्वेस्टर्स डजंट केयर. इन्वेस्टर्स लाइक यार आपने हमें पहले बताया नहीं, हमारी तो सारी चीजें हो गई, एग्रीमेंट साइन हो गई, ये हो गए. बिकॉज फ्रॉम रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव तो आपको ही बताना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई से पार्टिसिपेट मोर इन मोर मीटिंग्स. Sometimes what happens, we are not visible in the organization, that we have to make ourselves visible. Now how to do that? It's just that you are sending the regulatory things on a regular basis. That's what I do. कि,
या तो आप लेमैन में बना लो गूगल द चैट जीपीटीज एंड ऑल, कि सर ये आया है, अब हमें ऐसे करना है, पहले ऐसे करते थे अब ऐसे करना है, सिंपल. And if you are comfortable with your board, that is the best thing. You just call a board meeting by taking their time. कि sir ये है ये है. So it will create an impact. What I am seeing in the coming company secretaries, they are preparing the SOPs, and that is very very wonderful. Now moving ahead, foreign investors acquiring shares in Indian private company must ensure the company has completed a DMAT transition before any investment transactions. ये वो rule 9B कह रहा है. Investing in a company with non-compliant physical shares creates legal and settlement risks. What happens if non-compliant? New shares allotments are legally invalid हो जाएंगी. अगर आप नॉन कंप्लाइंट ऑलरेडी हो, किसी और के नाम पे शेयर्स हैं, आपने दूसरे के नाम पे उसने दिखा के आपको अलॉट करवा दिए, दैट इज इनवैलिड. शेयर ट्रांसफर्स कैन नॉट बी रजिस्टर्स. यस, आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन, that the guy has to sell 2000 मतलब 20 shares for 10 shares for 2200. So he was not able to share, sell it, क्या कहते हैं, फिजिकली, बिकॉज कंपनी हैज टेकन द आइज इन, और वो 18 महीने भी पास हो चुके हैं. प्लस जब आप ग्लोबली सेल कर रहे हो, तो दे विल लुक एट द कंप्लायंस, कि भाई ये कंप्लाइंट है नहीं है. आपने तो बेच दिया फिजिकल में, कि वो स्टैंप लगा दी, साइन कर दिए, दो लोगों का साइन करा दिया, हाँ भाई XYZ ने बेच दी. बट उनकी वहां की लीगल टीम यहाँ की लीगल टीम से पूछेगी ये इनवैलिड है, और जैसे ही द मोमेंट इट ट्रिगर्स द इनवैलिड, आपकी वैल्यूएशन अगर 500 करोड़ की है, वो गिर के 400 पे आ जाएगी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज द प्राइस ऑफ नॉन कंप्लायंस. नॉन कंप्लायंस क्यों ढूंढा जाता है? कंपनी जब ड्यू डिलीजेंस कराती है, आप चीज समझो फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव. नॉन कंप्लायंस इसलिए कराया जाता है कि आपका जो रिस्क मिटिगेशन है वो कितना है, और जो मैं पैसा दे रहा हूँ, नॉन कंप्लायंस का भी अगर मुझे देना है तो मैं वो काटूंगा. भाई 100 रुपए की कोई चीज है, अगर उसमें कुछ खराबी है तो मैं 90 ही दूंगा, क्योंकि 10 रुपए मुझे बियर करना पड़ेगा, या तो मैं 70 दूंगा. अब आप देखो, कंप्लायंस बहुत छोटा सा है, बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है. बहुत लोगों के ग्लोबल अभी जैसे मार्केट्स चल रहे हैं, लुकिंग एट द दिस वॉर्स एंड ऑल, बहुत लोग इंडियन इक्विटीज बेचने में लगे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट इक्विटीज. अब जिन्होंने नहीं करा रखा डीमैट, अब उतरे हैं, और बहुत जल्दी भी है, क्योंकि होता क्या है, सिचुएशन जैसे ही आती है 2 दिन में सबको चाहिए, तो 2 दिन में हो नहीं पाएगा. वाई सो? बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. एंड टू गेट इट प्रिपेयर्ड, दैट इज वाई यू हैव टू ऑप्ट फॉर द आइज इन देन मूव अहेड. अगर आपको 100 का 100 चाहिए, तो योर कंप्लाई योर यू शुड बी वेरी कंप्लायंट. अगर आपको 100 का 70 80 60 50 रुपए चाहिए, तो यू शुड बी नॉन कंप्लायंट. वो बाद में देखेंगे. एंड देन दे विल टेल यू अगेन कि यार आप इसको पहले कंप्लाइंट करा के आओ. वो जो उनके शेयर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं, दे विल राइट क्लियरली कि इफ एनी नॉन कंप्लायंस कम्स अप बिफोर सो एंड सो डेट, मिस्टर एक्स सो एंड सो विल बी रिस्पॉन्सिबल. So the investors party, they will prepare themselves in a very protective way, rather than in a very conservative way. हाँ ठीक है यार, देख लेंगे. So it is a global transaction. You have to understand from the very wider purview, rather than going कि यार अच्छा डीमेटेरियलाइजेशन ही तो है, कि हम बस शेयर्स इशू करेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, ऐसे ऐसे करना है. नो, यू हैव टू लुक फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट लेंस. Now, this is a complete procedure: converting shares, Demat, board resolution, appointing RT again, tripartite agreement, applying for ISIN, filing intimation, notify shareholders, open Demat. ये कंपनी का ट्रैक है, ये शेयर होल्डर्स का ट्रैक है. ओपन डीमैट विद द डीपी, कंप्लीट केवाईसी, सबमिट सर्टिफिकेट्स DRF टू डीपी. डीपी फॉरवर्ड टू डिपॉजिटरी एंड आरटीए. डीपी फॉरवर्ड करता है डिपॉजिटरी को, आरटीए कंफर्म ऑथेंटिसिटी की, हाँ भाई ये शेयर है अभी. डिपॉजिटरी क्रेडिट शेयर्स, और उसके बाद जो आपको बेचना वगैरह है वाया DIA स्लिप ऑफ मार्केट्स एंड ऑल, यू कैन डू दैट. नाउ केस स्टडीज, challenges and best practices. I will share this case studies for just 10 and 12 minutes, and thereafter we can take Q&As. First, a technological company with 12 shareholders, all residents, Indian individuals holding physical share certificates. The company was planning a right issue to raise growth capital and needed to be fully Demat compliant before proceeding. Action taken: board formally approved the Demat, appointed an RTA and depository participant promoters convert their holding first, establishing a benchmark process.
Employee ESOP holders were guided through the conversion process with dedicated support sessions. आप ये भी समझो, समटाइम्स ESOPs में भी आपको ये आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द आउटकम? आउटकम अगर आप प्रिपेयर करके चलते हो, अर्ली एंगेज करके चलते हो, तो इट विल बी इजी, आइज एन अलॉट हो जाएगा, डीमेट सक्सेस हो जाएगा, राइट इशू आप दोबारा भी आपको इशू करना है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइवेट कंपनीज। की लर्निंग इसमें यही होगी, अर्ली एंगेजमेंट विद आरडीए, प्रोएक्टिव। सी फॉर फॉरेन शेयर होल्डर्स यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। वो एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं दैट इज फाइन, बट यू शुड बी वेरी प्रोएक्टिव बाय गिविंग देम द एडवाइस कि सर ऐसा ही हुआ, इसके बाहर इधर उधर नहीं जा सकते। अपफ्रंट एडवाइस, हाउएवर यू कैन से थोड़ा बहुत दैट की वी कैन ब्रिज द गैप बिटवीन द टाइमलाइंस, कि हम आपको आज डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, हम उस पर थोड़ा वर्क ऑन अर्ली कर सकते हैं। जो आप कर सकते हो वो कर सकते हो, अथॉरिटी विल टेक इट्स ओन टाइम। केस स्टडी टू, दैट शेयर होल्डर रेजिस्टेंस इन अ फैमिली कंपनी। तो जनरली अभी आप देखोगे कि काफी कंपनीज है विच आर मैन्युफैक्चरिंग, जो क्लोजली हेल्ड हैं, मतलब परिवार परिवार के शेयर्स दे रखे हैं कि मौसा जी, ताऊ जी, इनको उनको शेयर्स दिए थे किसी जमाने में, अभी चल रही है कंपनी। अब जब आप कंसोलिडेशन पे आते हो, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि अभी आपको स्केल करना है। ये सारी चीजें क्यों करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको स्केल करना है, आपको और पैसा उठाना है मार्केट से। दैट इज वाई, और कंप्लाइंट रहना है, दैट इज वाई दीज थिंग्स कम। अब फूफा जी, ताया जी 95 96 ईयर ओल्ड हैं, पैन कार्ड किसी का है किसी का नहीं है, कहीं जाना है, नाउ दैट थिंग्स बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, आपको एक एक को पकड़ना पड़ेगा। अगर आपने ये सारी चीजें केवाईसी पहले ही करा रखी होती, तो यू डोंट हैव टू फेच फॉर द एवरीवन। आपने ट्रैकर खोला, आपके पास केवाईसी, आपने पंच करी, आपने साइनिंग ली, डॉक्यूमेंट्स के हो गया। अब आपको एक पैन के लिए अलग भागना है, डीमेट के लिए अलग भागना है, उनके वो नहीं है, सारी चीजें नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको पहले अलाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद होगा। आई हैव सीन इन मैनी you can say manufacturing companies based out at गाजियाबाद और अदर एरियाज, तो काम तो वो अच्छा कर रहे हैं 25 सालों से 30 सालों से, बट जब अब स्केलेबिलिटी की बारी आती है, कंप्लायंस होने की बारी आती है, अरे सर वो तो हमने किया नहीं। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द प्रोफेशनल्स कि यार ठीक है, नाउ वी कैन चार्ज एज वेल फॉर यू, बिकॉज वी आर गिविंग द एडवाइस टू यू एज वेल। चैलेंजेस आपको यही आएंगे, सेवरल शेयर होल्डर्स लैक डीमेट अकाउंट्स और नो पैन आधार। अब 97 90 इयर्स के, 8 इयर्स के हो गए हैं, who are not allowed to not allowed I'll say, who do not have PAN and Aadhaar linkage and all, वो सब आप कैसे कराओगे? That becomes a major challenge. डीमेट ओपन कराना इट्स नॉट अ बिग डील, डॉक्यूमेंट को कंसाइज ट्रैक पे लाना इट इज अ डिफिकल्ट थिंग, दैट कैन टेक अ मंथ्स। आप फिर बोलोगे कि यार हम पहले फाइल पंच कर देते हैं, डीपी आपसे डॉक्यूमेंट ही निकलेगा जब तक आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। एंड आई टोल्ड यू, रेजिस्टेंस फ्रॉम एल्डरली शेयर होल्डर्स कि अरे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। क्योंकि एक पार्टी जो है वो तो बैठी हुई है कि यार हमें स्केल करना है, हमें सारी चीजें कंप्लाइन करनी है, दूसरी पार्टी जब तक सपोर्ट नहीं देगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज आती हैं। लेकिन अब इसमें रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी सिंपल है, बट इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। कंडक्ट इन पर्सन केवाईसी सपोर्ट आपको ही करना पड़ेगा, एट टू लोकेशन असिस्टेड बाय कंपनीज लीगल टीम। 40 शेयर होल्डर्स हैं, पूरी लीगल टीम को लगना पड़ेगा। कंपनी शुड रीइंबर्स डीपी फीस, जो दिस इज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन व्हाट आई हैव सीन, कि एल्डरली विल रेजिस्ट कि व्हाई वुड वी पे, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग और अ 500 मंथली, सो कंपनी कैन रीइंबर्स। अपॉइंटेड अ सिंगल डीपी ब्रांच, एक ही ब्रांच को आपने पकड़ा, ये नहीं कि आधे शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि हम आईसीआईसी जा रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं हम एचडीएफसी जा रहे हैं। नो, यू विल टेक द लीड, द प्रोफेशनल विल टेक द लीड, दैट सर हम करा रहे हैं सारा, तो वी विल गो विद वन ब्रांच। क्योंकि क्या होगा, 40 के 40 अकाउंट शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट एक ही जगह रहेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ट्रैक करना भी, पूछना भी, कुछ भी आपको करना है तो आप वन स्टॉप शॉप से कर सकते हो। प्लस जो भी उनका डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट होगा वो आपको बताएगा। डीमेटेरियलाइजेशन आप देखो, इट इट हैज टेकन 5 मंथ्स। ये सबमिशंस की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर क्या कहते हैं, डोमेस्टिक पीपल। दिस इज नॉट अ फॉरेनर, फॉरेनर में तो इट विल गो टू 4 12 मंथ्स। फॉर कंपनीज विद ओल्डर डिस्पर्स एंड लेस डिजिटली लिटरेट शेयर होल्डर्स, काफी कंपनीज हैं दे आर नॉट टेक सेवी। बहुत कंपनीज आई विल सी एंड आई विल गो फॉर दिस
व्हाट यू कॉल्स अ कंप्लायंस चेक, तो मैं आज भी देखता हूँ कि कुछ नहीं मेंटेन्ड है। रीजन, फिर आप गाइड करो, अरे सर अभी कुछ नहीं करना है, एंड द मोमेंट देयर सन्स और ग्रैंडसन्स कम्स अप टू स्केल द थिंग कि यार चलो 20 साल 25 साल पुराना नाम है, उसको बढ़ाते हैं, ब्रांड बनाते हैं। लेकिन ब्रांड बनाने से पहले आपको पहले कंप्लाइंट होना पड़ेगा, तभी ब्रांड बनेगा। अदरवाइज यू हैव सीन इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस थिंग, बड़ी से बड़ी कंपनियां कोलैप्स हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस थिंग। नाउ मूविंग टू फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट वाया ऑफशोर फंड्स। A foreign body corporate invested in an Indian startup through a fund structure created outside India. Now, this is a very interesting case. अब एक्चुअल सिचुएशन अब शुरू होती है। होता क्या है, फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं वो एक लेयर में नहीं करती हैं, उनकी लेयर्स अलग अलग होती हैं। नाउ आई टेल यू, देयर इज अ एक्स शेयर होल्डर, एक्स लिमिटेड, जो कनाडा में बैठा है। एक्स लिमिटेड ने अपनी एक कंपनी बनाई है एक्स वाई जेड। उसने 4 फंड बनाए, एक्स वाई जेड, एबीसी, एलपीएफ। ठीक है, अब उसने एक्स वाई जेड से इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन जब आप डीमेट ओपन करने जाते हो वो कहता है भाई पैन ला के दो। लेकिन जो एक्स वाई जेड कंपनी बनी है वो वाया एन एग्रीमेंट बनी है, उसके लॉस से बनी है। एग्रीमेंट में कोई आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है, तो आप पैन कैसे लाओगे? दैट इज द नंबर वन चैलेंज। इन्वेस्ट किया है एक्स वाई जेड ने, एबीसी भी करेगा बाद में इन्वेस्ट, उसका भी है। तो अब आप कैसे कन्विंस करोगे टू द अथॉरिटीज कि यार आप जो है प्लीज पैन अलॉट करो? पैन के लिए तो बोलेगा डीमेट अकाउंट वो लेके आओ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दीज आर द चैलेंजेस दैट वी फेस, एंड इस चैलेंजेस से निकालने के लिए द बैंकर्स आर देयर, बट वो आपको पैन में हेल्प नहीं करेंगे। पैन करने के लिए यू हैव टू कन्विंस टू द अथॉरिटीज, एंड अथॉरिटीज आर वेरी रिजिड ऑन दैट कि भाई हमने तो 6 डॉक्यूमेंट बोले हैं, इनमें से ला के दो आप कैसे भी। मान के चलते हैं, मैंने, मेरी एक कंपनी है नीरज खत्री प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी है, उसका सिन है, सब कुछ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। मैंने दूसरी कंपनी बनाई है नीरज खत्री एंड एसोसिएट्स वाया एन एग्रीमेंट इन द कनाडा, इन द ऑफशोर थिंग्स। वहां पे वो लीगली वैलिड है, लेकिन मेरे पास उसका कोई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है। वो वाया एन एग्रीमेंट मैंने बनाई है और उसका एक ईआईएन नंबर आता है, दैट इज नोन एज द आईआरएस नंबर। जब आप टैक्स वगैरह फाइल करते हो तब आप देते हो। अब आप जब ओपन कराने जाओगे डीमैट उस चीज से, देन इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आपके पास पेन ही नहीं है। पेन आप कैसे करोगे? फंड के अंदर फंड है, फंड के अंदर फंड है, उसके बाद लास्ट फंड है, और सब एग्रीमेंट से बनी हुई कंपनी है। नाउ हियर कम्स द स्ट्रक्चरिंग पार्ट एंड ऑल, हाउ टू टेक द पेन एंड ऑल, सारी चीजें, दैट इज द चैलेंज। तभी बोलते हैं ना कि आपको डीमेटेरियलाइजेशन दिख रहा है कि यार बस क्या कहते हैं, फिजिकल शेयर्स को हमें डीमेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कराना है। नो, अभी आप चैलेंजेस फेस करोगे व्हेन यू डील विद द फॉरेन काउंटर पार्ट्स। कैसे कराना है? बैंकर्स समटाइम्स असिस्ट, समटाइम्स डजंट असिस्ट, बट दे डू हैव द कैपेबिलिटी टू असिस्ट यू। वो बता देंगे कि ऐसे 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 करना है, ऐसे ऐसे सारी चीजें करनी है, बट यस द चार्जेस आर अकॉर्डिंगली, बिकॉज दे विल गिव यू द स्ट्रक्चर। बिकॉज यू हैव सीन अ लॉट ऑफ कंपनीज का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही वाइड है। यू कैन नॉट गो एंड फेच दैट। उसी के लिए रूल 9 भी आया है, लेकिन अभी भी काफी डिफिकल्टीज हैं फॉर द फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट। नाउ आई टेल यू व्हाट आई वाज फेसिंग। एक सेफ एग्रीमेंट होता है, ठीक है? सेफ एग्रीमेंट के थ्रू मतलब बोला जाता है कि हम जो सिक्योरिटीज हैं हम फ्यूचर में सब्सक्राइब करेंगे। आपने एक एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, फॉर द स्टार्टअप्स एंड ऑल, काफी ज्यादा पॉपुलर है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट्स। अब क्या होता है कि अभी जैसी सिचुएशन चल रही है, पीपल आर लाइक कि यार अभी थोड़ा पैसा चाहिए, एंड वी हैव इन्वेस्टेड सम 10 करोड़, लुकिंग एट द वैल्यूएशन वी आर गिविंग द 12 करोड़, सो हम अपना सब्सक्राइब करके पैसा निकाल के दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब जब आप उनको बोलते हो यार ये डीमेट डीमेट का है चीजें, तो वो बोलता है ठीक है मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। द मोमेंट यू आस्क यार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहाँ है एबीसी का, तो वो कहेगा यार ये तो एग्रीमेंट है, मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है। तब आप कहोगे ठीक है, लेकिन पैन अकाउंट, पैन ओपन करने के लिए आपको चाहिए। देन देयर कम्स अ प्रॉब्लम, यू हैव टू satisfy the NSDL, the protein, that these are the only document I am having. क्या अपोस्टाइल होना है, क्या नोटराइज होना है, क्या कॉन्सुलराइज होना है, दैट बिकम्स अ बिग चैलेंज फॉर यू। प्लस प्लस
अब जब आप एक करा रहे हो तो डेफिनेटली इन्वेस्टर आपको बोलेगा यार चारों के करवा दें। चारों में 10-10 शेयर होल्डर अलग अलग हैं, एंड यू विल बी वेरी श्योर वो इंडियन शेयर होल्डर्स ही हैं जिन्होंने पूरा ऐसा राउंड करके पैसा वापस लाया है और उनको वापस ले जाना है। नाउ दीज आर द challenges you will face when you deal with this sort of things, and the time taking, the time is not defined कि कितना टाइम लगेगा। why? बिकॉज एक शेयर होल्डर बैठा है कहीं बिल्कुल ही मतलब केमन आइलैंड्स में या कहीं पे भी, श्रीलंका में कहीं पे भी, दे ऑल आर HNIs, so they travel the whole world। अब वो बंदा लंदन गए बैठा है श्रीलंका में, उसको नोटराइज अपोस्टाइल करने के लिए लंदन आना पड़ेगा, फिर करवाएगा फिर जाएगा। तो यू कैन एंटिसिपेट द टाइमिंग्स, देयर आर ह्यूज टाइमिंग्स। नाउ विल सी द फंड वाज a foreign body corporate invested in an Indian startup through a fund structure created outside India. The fund was a special purpose vehicle registered in a jurisdiction where formal certificate of incorporation was not legal requirement, क्रिएटिंग एन इमीडिएट केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन गैप विद एन इंडियन डीपी। भाई डीपी बोलेगा मुझे तो लाके दो, कहीं से भी लाके दो, क्योंकि वो तो जो लिख गया तो वो तो मांगेगा ही मांगेगा। चैलेंज इज द फंड हैज नो सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन एज इट वाज नॉट मैंडेटेड इन इट्स jurisdiction। कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर ओनरशिप स्ट्रक्चर, इसी को तोड़ने के लिए ये एक्ट लॉ लाया गया है इंटेंट से। अल्टीमेट आइडेंटिफाइंग यूबीओस required detailed legal analysis। KYC documentation was not standard and did not match with the DP prescribed formats। बहुत सारे फॉर्मेट्स होंगे जो उनसे मैच नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग अक्रॉस मल्टीपल टाइम जोन इन लीगल सिस्टम कॉज सिग्निफिकेंट डिलेस, इसमें आपको डिले आएगा। अब रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी क्या है? कंडक्ट अ थरो रिव्यू ऑफ फंड्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। व्हाट आई हैव सीन, देयर इज अ लेग बैक कि कोई भी चीज होती है, कोई भी कंप्लायंस करते हैं हम लोग कि कोई बोलता है ये कंप्लायंस, हाँ हाँ हो जाएगा, नो, डोंट डू दैट। दिस इज अ पर्सनल सजेशन कि आप कोई भी कंप्लायंस करते हैं और बोलते हैं हाँ हो जाएगा, डोंट डू दैट विदाउट गेटिंग द फुल डिटेल्स ऑफ द केस। अब इस केस में जैसे आप देखोगे, व्हाट आई हैव डन इज फर्स्ट आई विल अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। मैं आपसे बोलूं कि डीमेट अकाउंट खुलवाना है, 100 आउट ऑफ 90 पीपल हाँ सर खुल जाएगा खुल जाएगा, एंड द मोमेंट आई प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट्स, अरे सर वो तो हो ही नहीं पा रहा है, अरे ये नहीं हो पा रहा है। रीजन इज दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड द एग्जैक्ट सिचुएशन। काफी ज्यादा चीजों में आप भी देखते होंगे दैट कि अरे सर हमने वो एनसीएलटी में पिटीशन फाइल कर दिया, जस्ट यू हैव टू अपीयर, दैट्स इट। क्या एप्लीकेशन है, क्या है, क्या चीजें हैं, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन ओनली यू कैन अपीयर, अदरवाइज यू विल फॉल फ्लैट ऑन योर फेस। obtained certified KYC documentation from each UBO, notarize and apostille। Now it depends on country to country। सबसे पहले आपको चेक करना है कंट्री हेग कन्वेंशन में है या नहीं है। वहां पे भी हेग कन्वेंशन चलता है, बट जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नोटराइज्ड ही लिए जाते हैं। सम बैंक emphasize on apostillization, but you have the right to tell them only notarization can work। कोऑर्डिनेट डायरेक्टली विद द डिपॉजिटरी कंप्लायंस टीम। जब भी आप कोई भी डिपॉजिटरी पकड़ो तो उससे कहो कि कंप्लायंस टीम से हमें या एक बंदे से इंट्रोड्यूस कर दे, वरना आप आरएम को बोलोगे रिलेशनशिप मैनेजर को, रिलेशनशिप मैनेजर पहुंचाएगा तो इट विल क्रिएट अननेसेसरी डिलेस, कि आज बोला है 2 दिन बाद वो कंप्लायंस टीम 2 दिन बाद रिप्लाई, तो आपका पूरा वीक चला जाएगा। नाउ इफ यू हैव अ डायरेक्ट कमिट direct contact of this compliance person, you can directly reach out to them by marking the CC to them, and you will get a reply in 24 to 48 hours, which will save your time, so you have enough buffer to cater to your clients and all। Appoint a single DP branch to centralize all communication and submission। अब एक कंपनी में जैसे 6 शेयर होल्डर हैं, तो एक ने बोला मुझे HSBC में अकाउंट खुलवाना है, दूसरे ने कहा मुझे सिटी में खुलवाना है, आप अपफ्रंट मना करो। वाई आई एम सेइंग दिस, because it will entail an entire year for giving them yes no Q&As। you just tell them we have a good relations with this bank and we are going with this। why I am saying is this, कोई भी Q&A है, कोई भी सारी चीजें आप एक जगह शूट कर सकते हो, रादर देन आप सिटी को भी पकड़ रहे हो, HSBC भी पकड़ रहे हो, ICICI पकड़ रहे हो।
अदर बैंक्स पकड़ रहे हो। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, क्योंकि होता क्या है, हमने काफी जगहों पे देखा है, आप कर तो लेते हो चीजों को, भाई फॉरेन क्लाइंट नाराज ना हो जाए, एनी हाउ यू हैव टू एडवाइज देम कि सर आप समझो, वी हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद देम, दे विल असिस्ट अस इन डूइंग दीस सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड दे आर वेरी फुल्ली प्रिपेयर्ड ऑन दैट। अनलेस क्या होगा कि आपका एक क्लाइंट में ही ना, एक डीमेट अकाउंट में ही आप समझो 3 3 5 5 महीने बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही बैंक, एक ही डीपी, एक ही नॉन बैंक डीपी के पास जाते हो, यू अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट्स, आपको पता है सेम सेम डॉक्यूमेंट से ये करना है, शीट सेम है, एसओपी सेम है, तो आप अकॉर्डिंगली उसके मुंह पर। व्हाई आई एम डिनाइंग फॉर द डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स, हर किसी के इंटरनल पॉलिसीज अलग है। होगा क्या कि जब आप सिटी बैंक के पास जाओगे तो बोलेगा ये लेके आओ, एचएसबीसी बोलेगा नहीं नहीं ये लेके आओ, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि वो ये मांग रहा है, ये नहीं मांग रहा है। ऑलवेज फोकस्ड ऑन अ सेंट्रलाइज फॉर बोथ द शेयर होल्डर्स। अगर एक कंपनी में दो हैं, एक ही पकड़ो आप डीपी, एक में चार है, छह, आठ है, इररिस्पेक्टिव वो जितना भी कहते हैं कि सर आप इसमें कराना है, देन यू हैव द राइट टू टेल देम कि ठीक है सर, फिर आप अगर आप करवाना चाहते हो तो यू कैन मूव अहेड विद योर बैंक। वो आपसे ये भी कहेंगे ओके वी आर मूविंग विद आवर ओन बैंक, तो आप उनसे वो बोल सकते हो, बिकॉज वी नो व्हाट challenges वी आर फेसिंग इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टार्ट अर्ली। जितने भी नहीं हुए हैं, सबसे पहले तो आप आइजिन ले लो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। स्टैंडर्डाइज केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन, तो जब भी हम डीमेट कराने जाते हैं ना फॉरेन शेयर होल्डर्स के, आप केवाईसी डॉक्यूमेंट सबके ले लो। अगर इंडिविजुअल है तो बहुत ईजी होगा। फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके पीछे कोई लेयर नहीं है, जैसे कि एक्स वाई जेड को होल्ड करता है बी इंडिविजुअल, तो दैट इज अ फाइन थिंग कि आपके बी इंडिविजुअल से केवाईसी आपको लेना है और एक्स वाई जेड की लेनी है। लेकिन अगर लेयर्स हैं तो यू हैव टू स्टार्ट स्ट्रक्चरिंग, get on a call with them and then start doing these things। मैप, आपको मैपिंग करते आनी चाहिए। नाउ अगर एक कंपनी में चार लेयर्स हैं, चारों में 10 10 शेयर होल्डर्स हैं, जिनमें दो दो तीन तीन कॉमन है, आप कैसे कैसे करोगे, बार बार आप डॉक्यूमेंट्स थोड़ी मांगते रहोगे। दैट इज वाई हेयर कम्स मैप यूबीओ स्ट्रक्चर्स। आपको मैपिंग आनी चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर शीट कि यार इस शीट में ना ये है इस बंदे से, कि हमें एक बार में ही दो दो सेट मांगने हैं, तीन तीन सेट मांगने हैं। दीज आर वेरी बेसिक्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन अरे सर मिस हो गया, आपसे मिस हो जाएगा, बट वो फॉरेन शेयर होल्डर्स या फॉरेन जो आपकी पार्टी है ना उसके ऊपर इंप्रेशन गलत चला जाएगा, दैट यार एक बार में नहीं मांगते, इज नॉट दैट प्रोएक्टिव। इररिस्पेक्टिव आपकी गलती नहीं होगी। use a single DP that file form pairs, everybody knows that। So see, I am not here to educate you on कि फाइलिंग क्या है वो क्या है। आई एम गिविंग द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि कैसे हो रहा है मार्केट में, और आप फेस करोगे बिग फोर्स में, कंसल्टिंग्स में, सारी चीजों में। बिकॉज व्हाट हैपेंस, लीगल टीम बोल देगी कि यार हाँ ठीक है आप कर लो, फिर सेक्रेटरियल टीम पे आता है सारा। नाउ सेक्रेटरियल इज वेल वर्स्ड विद दीज थिंग्स ना, तो आप बहुत इजीली गाइड कर सकते हो। So now I request your Q&As and thank you so much for listening. So Abhinav, Yes, sir. So thank you so much. And the first question is from Abhay Arora. He's asking, he wanted to know if a company is in compliant with every provision for the allotment of shares in Demat, but if one of the lotee is a foreign investor who does not currently own a Demat account, so to him the shares are not allocated within 60 days. So will the company be liable to the investor, or like what is the solution to this? there is a company who has allotted shares to its shareholders, and one of the shareholders is a foreign person, right? Hello. Yes, one of the shareholder is a foreign individual, and Hmm. my query is that shares are allotted to every other individual, but for that foreign individual, shares are not allotted because he doesn't own a Demat account, Hmm. and 60 days have elapsed. So, as per Companies Act, a company cannot utilize the funds before the allotment is made to everyone. So Hmm. my first pointer was whether the company can utilize the funds, and second question was whether is there any non-compliance on part of company if the investor himself is not providing the Demat account and does not have it.
So see, there are two aspects. The first is the Rule 9B that company facilitates the dematerializations. Okay, you have facilitated. However, they have not submitted you the documentations for opening of the Demat account, right? Therefore, the company in that case not liable, but considering the 60 days allotment, they will be liable, but you have to present the case. If it comes in the notice of ROC, then you have to present your case in such a way that we are not able to get the documents on the right time. Secondary, regarding the utilization of funds, yes, you cannot utilize that unless you will allot this all. Neeraj and Abhay, I would like to add something with your permission, if you Hmm. permit me. Then Yeah, please, sir. Sagar, go so ahead. can we allot the share to all the shareholders Hmm. and mention in the board resolution that board hereby approves the allotment of these number of shares to all the shareholders, and the shares will be credited in the demat account of the shareholders when company will get the details from the respective shareholders. So can this thing, then can this issue be solved in this manner? Yes, this can be done. So it proactively, safeguard you from, getting into the non-compliance of Rule 9B that, the company has facilitated. But however, for 60 days rule that you have to mandatory allot, that will be, may be penalized. No, we If have it, allotted. Board hmm. has already allotted within the 60 days time period, Okay, but but not credited. not credited, right? Yeah, yeah, that will safeguard you. That's perfectly fine. Okay. So Abhay, I think you can do this in this manner. Yeah. Okay, sir. Got it. Got your point. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Abhay. So Neeraj, I also have one question that, Hmm. as you explained, that after the if a newly incorporated company, Hmm. suppose incorporated in January 26, and Hmm. its first financial year closed on 31st March 2026, and the No, company has 18 months 27. time period to open the demat account. So Correct. company got the ISIN in the financial year itself, and Hmm. in April, company wants to issue the right issue shares. Hmm. Okay, so uh, and the shareholders does not have a demat account. Hmm. So can we use the same approach in right issue, or will it create some issues No, that see, with once respect to filing? once you first you have allotted the shares in a physical form, that's right. But the moment you take the ISIN number, then you have Yes. to mandatory issue the shares in a demat form. You Okay. So cannot it issue means, the shares in a physical form. okay. Okay, then we can't share issue No, share in physical when we got the ISIN. correct. Either don't get the ISIN or you'll apply at the last stage, structure that accordingly. Okay, But got it. Okay. even if you get the ISIN, for example, if you are incorporated in January and you have, allotted the shares in a physical form in January and done the compliance, in February you got the ISIN. Thereafter, you cannot do any corporate action without having the Demat accounts. Okay. So any corporate action without having the Demat account. Any corporate actions like buyback or you can say right issues, preferential allotments. First, you have to get the Demat accounts, then only you can do that. Okay. Okay, but if we can use the same approach that mentioned in the board resolution and do the right issue, then it will create some issues. Then without Demat accounts, how can you issue that? That is the major thing. Board has allotted the shares, but the Hmm. credit will happen when company will get the Demat accounts. Hmm. And Uh, and one more thing related to this only, that hmm. after allotment we have Hmm. allotted the shares, and we have Hmm. to pay the stamp duty uh, Hmm. within 30 days. Hmm. So how we will comply the stamp duty part with respect to that allotment? Now that is also becomes a challenge. So for Demat account stamp duties, there is a portal given to you by the NSDLO CDSL, Right, whereby you have to enter your DP details. Okay. right.
Right. and you have to enter the amount of transactions and what share number of shares and what price you have bought it. Okay, Right. they will calculate it accordingly. For example, Right. there are 10 shares, so Yeah, got it, got it. Yeah. for Amount 10 will come and paisa you will pay. Yeah, right. you will pay, and Yeah. you have to keep this acknowledgement that we have paid to via Okay. this thing. So it means, However, okay, yes. please continue. However, in your case, you are saying that we will allot and credit it at a later date. Hmm. This can be good in terms of when you have other shareholders who already have demat. But in terms of your situation, where you are saying that we are allotting, but we'll credit it in the demat account. So at what time you will open the demat account, that will be a most critical thing for you. ओके, Hmm. अब आप बोल रहे हो कि मैं यार डीमेट अकाउंट मैंने अलॉट तो कर दिए हैं, मैं डीमेट अकाउंट अब 6-8 महीने बाद में खुलवाऊंगा। तो आपको Hmm. ये भी कंसिडर करना होगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, टैक्सेशन ट्रीटमेंट आप इसकी कैसे करोगे, बिकॉज क्वेश्चंस विल अराइज फ्रॉम द ऑडिटर्स कि यार Hmm. आपने अलॉट तो कर दिए, क्रेडिट नहीं हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं Right. शेयर्स। So Hmm. these things, so you have to take a 360 view apart from just the MCA view or the It, Companies Act got view. it. So Hmm. with respect to stamp duty part, if we are paying the stamp duty on the NSDL or on the portal, then Hmm. we can comply the stamp duty part. But with Hmm. respect to the allotment we have done but not showing in their Demat account, that we have Hmm. to figure it out. Okay, got Correct. it. Okay. एंड ऑल्सो ड्यूटी का ये है, स्टैम्प ड्यूटी का, कि जब आप ट्रांसफर वगैरह करते हो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर, तो आपको पहले पे करनी होती है इन ऑल Right. सिचुएशंस. So this has came to my knowledge when I was dealing with a practical situation that first you have to pay the stamp duty and then the transaction will go abroad. Like off market shares were we were selling for a shareholder. There were 10 shares which I have told you. तो द बैंकर विल आस्क कि आपने शेयर स्टैम्प ड्यूटी पे की है तो प्लीज पुट द एक्नॉलेजमेंट. सो whosoever is transferring the shares in after this dematerialization thing, please Hmm. know that first you have to pay the stamp duty, then only you can transfer via off markets. Okay. And as you mentioned that if we got the ISIN in the month of March, then we can't Hmm. issue physical shares No. to the shareholders. So my point, okay, we agree that we can't issue physical shares, and now there is a requirement to file PAS 6 Hmm. by within 60 days from the end of financial year. So in Hmm. PAS 6, we are showing that these number of shares are in physical mode. Correct. So I don't think so that would be any issue with respect to the No, no, ROC no. filing. No, that is not an issue. They are just asking you कि आप किस फॉर्मेट में रख रहे हो. They are not asking Okay, you to do got this it, and that. got it. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. So there's another question from Ankit Gupta कि if a company has earlier like obtained ISIN, subsequently वो मतलब small company बन गई under the revised definition में, तो now the Hmm. company wants to issue the NCD. तो जो ये proposed NCD है, ये physical form में मतलब physical form में भी हो सकता है, या फिर whether मतलब the company needs to obtain ISIN and issuance in demat form is like still नहीं, mandatory. सी अगर जो उन्होंने आइजन लिया है वो इक्विटी फॉर्म में लिया है, राइट, इक्विटी शेयर्स के लिए लिया है. हम्म. नाउ यू आर अलॉटिंग टू द एनसीडीज और आप स्मॉल कंपनीज के पर्सपेक्टिव से मतलब स्मॉल कंपनीज के पर्सपेक्टिव में आ जाते हो, देन यू कैन इशू द फिजिकल थिंग्स. यू डू नॉट हैव टू गो विद अगेन एंड गेट द आइजन इफ यू आर नॉट following in the particular category. Hmm. Okay. Okay, so there's another question from Anshul ki how can the shares of a private limited company जो held a demat form में can be transferred? So your question is how to transfer the demat shares in transfer the demat shares. Can you come again for this question? Like how can the shares of a private company के जो demat form में है वो transfer हो सकते हैं? मतलब So transfer there of is the a shares या demat form में. तो देयर इज अ प्रोसेस. जब आप डीमैट अकाउंट लेते हो ना, तो डीमैट अकाउंट जो भी आप जिससे भी आप डीमैट लोगे, सो दे विल इशू यू अ डीआईएस स्लिप, ओके, एंड अ डीआरएफ फॉर्म्स. अलॉन्ग विद दैट, जहां पे भी आपका डीमैट अकाउंट है वो आपको एक ट्रांजेक्शन स्लिप भी देते हैं. तो ये तीनों स्लिप्स आपको भरनी होती हैं अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट्स. आपको ये सबमिट करना होता है. देयर आफ्टर दे विल इशू एन वन टाइम पासवर्ड इन योर मोबाइल एंड दे विल शेयर यू अ लिंक. उस लिंक को क्लिक करके यू हैव टू से ओके, एंड दिस इज द थिंग. तो 2 या 3 ओटीपीज आते हैं. जो बायर होगा
उसके पास बाद में जाएगा। सेलर यहाँ से सारा काम कर देता है, तो विद इन 2 और 3 मिनट्स तो आपके भी ट्रांसफर हो जाते हैं। देयर आफ्टर Mhm. जो जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो उसको अपने अकाउंट में लॉग इन करके देखना होगा। सेकेंड थिंग, ये जानने का सबसे सही तरीका है, आप आरटीए को कॉल करो एंड टेल देम टू सेंड यू द बैंकोस स्टेटमेंट। उसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि शेयर किसको ट्रांसफर हुए हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। Mhm. However, every bank or every DP will guide you on that. सर उस केस Okay, में fine, sir. प्राइवेट कंपनी के So केस there's में an क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड होता है राइट सो इन दैट हम्म। केस आपको शायद आईसिन जो है सस्पेंडेड रखना होता है आई थिंक सो तो आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं मेरे को नहीं, आप ऑफ मार्केट तो सेल कर ही सकते हैं ना, यू आर ट्रांसफरिंग ना। यस सर हाँ, तो आप ऑफ मार्केट पहले तो यू विल डू द ऑल द कंप्लायंसेस एंड ऑल, टेकिंग द बोर्ड थिंग्स एंड ऑल। बिकॉज व्हाट हैपेंस, जनरली हम जो कंपनीज एक्ट में ट्रांसफर करते थे बस वो SH4 फाइल करके कर देते थे। बट हेयर इन केस यू हैव टू गेट द मीटिंग्स एंड यू हैव टू एडमिट एज अ मेंबर एंड देन ऑफ मार्केट आप सेल करोगे, राइट? हाँ यस सर यस सर hello. यस अबे। Hello. Uh, Hello. Abhay, you want to speak, please? Yeah. Yeah. Actually, earlier you told na one resolution for my query that we in the board meeting we can pass a resolution in that we can write that subject to details provided by the investor for the Demat. So हम्म। in that I had a query that even though allotment is done within 60 days, but shares are not credited to the account within 60 days. So in that case, allotment is done, but shares are not credited to the investor's account. In that case, can the company utilize the funds? No, I don't think so. Utilize it. That is why Sagar has told you can modify the language, but the utilization is altogether a different thing. No, what is the condition which is restricting you to utilize the fund? So I think this is the condition in private placement, right, Abhay? Mhm. Yes. Yeah, okay. So private placement puts a restriction that you have to file the PAS 3 with ROC and then only you can utilize the funds. So when you have already your board has allotted the shares and it is mentioned that the shares will be credited once you will get the Demat account details from the shareholder. So you have done your part within 60 days and you will file the same board resolution related to allotment of share with ROC. Once you will file the PAS 3 with ROC, then your duties will be done. And I don't think so any restriction with respect, because the restriction is that company cannot utilize the funds without filing the PAS 3 with ROC. Not the restriction is not that the shares have not been credited. I don't think so, but Oh, this is because this is related to the regulatory. We can't challenge the regulatory person with respect to these things, because your case is a private placement and it's one of the highest penalty section under the Companies Act 2013. So it's better to take the restricted view. But frankly speaking, as per my understanding, the crediting of shares in the Demat account of shareholder is not a restriction with respect to the utilization of fund. This is my personal view. Other views or of all other members in this group are also welcome. Please share your thoughts. How Abe can resolve this issue? No, you have rightly mentioned, but we need to go back and see. I think that is a very, very interesting question. So right now, I don't have an answer unless I'll go through the complete case, what you have given me. So I'll check back and get back to you on that because I am not too sure on that. There are certain other things as well that needs to be taken into consideration. So I partly agree with Sagar, but yes, I'll come back to you. Abhay. Sure, Abe. okay, sir. Once you will get the response, please share the Of course, response and the answer from me with me as well, so that I can also of course, get of course, some information that in this case how we can proceed. of course. Sure, sir. As soon as I get any resolution on this, I'll share with you. Okay, thank Sure, you. sure. Sagarji, it's a really very great insight, right?
So I believe Neeraj will definitely look into it, and Hmm. definitely it will be communicated to us, Hmm. and we'll share with both Abhay and Sagarji, and Sure, accordingly we'll share with all the participants also, right? So it sure. was for the better understanding of the participants. Thank you Sure, very sir. much. Thank you. Yeah, Radhika, we have other All questions right. also. So, yes, sir. Yeah, please. So there's another question from Shubham that can a deemed publication to WOS as mentioned under Rule 9A? Sorry, your voice is breaking, Radhika. Can you come again? So can a deemed public company avails the Mhm. exemption to WOS, wholly owned subsidiary, as mentioned under Rule 9A? Deemed public. Company. Uh, So just a moment, my yes, you are saying a deemed public company can avail an exemption under Rule 9A. Am I audible? Yes, sir. Shubham, if you are there in the meeting, you can just unmute yourself and can ask your query for better understanding. Yeah, thank you, Radhika, and hi, Neeraj. Yeah, hi Shubham. Yeah, hi. Uh, Shubham, just a Neeraj, sec. Just a sec. I think mhm, I'll stop the video to, get the right. Just a sec. no Yes, worries. yes, Shubham. Yes, please. Okay, Neeraj, for unlisted public companies, there is an exemption to the wholly owned subsidiary companies, particularly that they are not required to maintain the Demat account, but Okay. not they can retain the shares in physical form. So, Hmm. in case if a private limited company, by virtue of its shareholding, converts into deemed public company, Hmm. then that same private limited company, which is converted into deemed public company, can enjoy the benefits under Rule 9A. Uh, this we have to see from the perspective of date of the deemed public company getting into the public company. Right. Then only if it is applicable, the laws are applicable, then definitely you can enjoy the exemption. Otherwise, till the Mhm. time it is a private company and falling under such and such rules, definitely. Exactly, exactly. Because this can be one of the route to avoid that Demat चलो holding सर, by private limited company. तो तुम कर लो Yes, but you have to understand that see, you have to understand the what law is trying to tell you. See, for मैं आपको एक layman में बताऊंगा. Law is a Mhm. way, okay. So how you go ahead, that is up to you. But Right. it doesn't means कि कोई चीज restricted नहीं है तो वो हम कर सकते हैं. So this is Mhm. also a view of law. So based Right. on that, see, there are a lot of n number of advices are there. Okay, Mhm. unless we go through the rule, unless we go through with understanding the situation, then only Mhm. we can tell कि हाँ ये हम कर सकते हैं. Because a lot of people find it a very on a gray area कि यार ये हम कर लें क्योंकि रूल तो मना नहीं कर रहा है. Thereafter something comes up, अरे नहीं नहीं आपने ये नहीं किया. So we have to Mhm. analyze every aspects कि अभी मना नहीं Right. है, आगे हो सकता है. अभी अगर नहीं है तो you can move. जैसे तुम लोग करो. देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन से भाई फिजिकल शेयर्स. काफी लोगों का आता है कि यार हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, पहले ही हम आइजन ले लें क्या, पहले ही हम वो कर लें क्या. लेकिन रूल्स जब कह रहा है आप पहले फिजिकल करो तो पहले फिजिकल कर लो. सो डिपेंड्स अपॉन ऑल टुगेदर ऑन अ सिचुएशन टू सिचुएशन बेसिस. अभी आपका डीम्ड बोल रहे हो तो डीम्ड जब उस Mhm. पर कॉल करेगा देन यू कैन मूव अहेड. I didn't get you in. एम आई ऑडिबल? हाँ, you're Yes. audible. So, your question was if it is was a deemed public company, Mhm. okay, कि आप avoid करना चाहते हो डीमेट, राइट? हाँ, हाँ. डीमेटेरियलाइजेशन है नहीं, ना? नहीं जी, दिस कैन बी वन ऑफ द रूट ना. जैसे अगर हमारे हम्म. पास में काफी सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं अंडर दी अम्ब्रेला, लाइक एक ग्रुप हम्म. कंपनी है एट द टॉप, एंड अंडर दैट ग्रुप कंपनी देयर आर हाँ, 5 7 सब्सिडरी टोटल कंपनीज. अंडरस्टूड. Then हम्म. you can convert that holding company into a public company, and thereafter all of the wholly owned subsidiary company हाँ. under that company are deemed public company. हम्म. तो So ये यस, सो दिस इज अ स्ट्रक्चरिंग, राइट? सो hmm, रिस्ट्रक्चरिंग में तो आप कुछ भी करो अंडर द लॉज, hmm, दैट इज फाइन. hmm, देयर इज नो hmm, सच रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट, तो वो आप कर सकते हो.
Right. That Excuse is me, what. sir. So can I ask one question? Yeah, Nidhi. Hello, Yeah, Srinivas sir. Nidhi. So Yeah. my question is, a deemed public company, a private company which is a wholly owned subsidiary of a public company, and it's a small company. Hmm. And Hmm. so, as per Rule 9A, it's not applicable to them कि they have to demat the shares. But 9B, Hmm. 9B में they will fall and they have to demat their shares. Yes, अगर आपकी होली ओन सब्सिडरी द डे इट बिकम्स द होली ओन सब्सिडरी देन यस, Yeah. क्योंकि वो एक्सेप्शंस वही है अगर आप Okay. So देखोगे then तो. they have to demat their shares even if यस they are यस. small private company. नहीं, अगर आप मान के चलो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. अगर कोई, जैसे मान के चलते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसने एक्स वाई जेड उसकी होली ओन सब्सिडरी है, ठीक है. नाउ हम्म एक्स वाई जेड की कैपिटल 1 रुपए है. वी आर नॉट गोइंग विद 1 लाख और व्हाट्सएवर. अब चाहे उसकी शेयर होल्डिंग 1 रुपए भी होगी ना, दे आर हम्म अंडर, वो एक्सेप्शन है स्मॉल कंपनीज का, क्योंकि होली ओन सब्सिडरी में आपको करवाना ही है. होली ओन सब्सिडरी Okay. कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ स्मॉल कंपनी. वो आप रूल पढ़ोगे ना, उसमें आता है that Hmm. these are the companies who are the exceptions, wholly owned government companies and all. Sorry, wholly owned subsidiaries, Section 8, etc. Hmm. Okay, sir. Okay, thank you, Yes. sir. All right, Yes, so I Amit. guess there's Neeraj, I have one more issue, one Hmm. more concern. Hmm. In case of private limited companies, when we transfer the shares, mostly Hmm. the articles of a private limited company restrict the transfer Hmm. through that right of first refusal. In that Hmm. particular case, for a shareholder, Hmm. it needs to comply with those, or it can freely transfer the share. No, can you repeat that again? Um, look, there is a private limited company in which a shareholder needs to transfer the shares. Hmm. And by the articles of that private limited company, right of first refusal clause is there that that person has to give the intimation to the directors. And directors then intimate the other shareholders if there Correct, are correct, any correct. interested Hmm. shareholders. Hmm. But in case the shares are in demat form, in that particular scenario, the shareholder can freely transfer those shares. There is no Hmm. restriction on such a scenario. My particular query is ki how we can restrict those transfers in that particular case. So in your case, that if you are holding a shares in a demat form, you want to transfer Hmm. to a third party, so you want to Right, right, restrict that, right? right, right, right. So With without permission, it restricting is all. with Yes. respect to that private limited company, if two of the shareholder, if a shareholder is transferring shares to the third party, I need to restrict that transfer before complying with that ROFR, right of first refusal. No, you are restricting to whom? You are restricting The to. shareholder. I want to restrict the shareholder to transfer freely to the third party. That he needs to first comply with that ROFR clause, and then he Hmm. can transfer the third to the third party. Okay, so what exactly you want? So you want to restrict him? Okay, so via you can restrict it via altering the articles, or by having a shareholder agreement in place, or of course without giving you intimation. No shareholders, if there are two shareholders in a company, Mm-hmm. without giving an intimation to the prior shareholders, the shareholders cannot transfer to the new shareholder. नहीं पर इसमें हमारा डीमैट के अंदर तो हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन है ही ना इफ समवन अग्रीज टू परचेज दो शेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो वो हम्म। कर सकता है उस ट्रांजैक्शन को अ कंपनी हाँ, हैज वो कर नो सकता है, कंट्रोल ओवर वो इट कर सकता है, बट यू हैव द राइट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क टू दैट, कि आपने विदाउट इंटीमेटिंग यू हैव डन दैट, दैट इज अ नॉन कंप्लायंस. राइट तो फॉर एग्जांपल, अगर हम दो शेयर होल्डर्स हैं, ओके, एंड हमारी अगर मान के चलते हैं कि नहीं बनी, एंड आई एम हैविंग अ डीमैट अकाउंट, तो मैंने किसी फॉरेन शेयर होल्डर को पकड़ा, आपको नहीं बताया उसका डीपीएन, आप यही कह रहे हो ना, मैंने उसका डीपी आईडी अटैच हाँ किया हाँ और सीधे ऑनलाइन बिल्कुल उसको ट्रांसफर कर दिया शेयर्स, राइट? अपने राइट कंपनी. राइट राइट आप रोक नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए, बट यू हैव द हम्म राइट इन द लॉ. भले वो ट्रांसफर हो जाएंगे, दैट इज फाइन, बट यू हैव द हाँ राइट टू आप वो वापस ला सकते हो, कि आई हैव नॉट गॉट एनी इंटीमेशन एंड ऑल, देन यू हैव टू अप्रोच टू द एनसीएलटी और द आरओसी, दैट दिस उसमें वाज
नहीं हम्म, नीरज, उसमें ना वो प्रोसेस ना लंबा हो जाएगा कि हमें एनसीएलटी अप्रोच करना पड़ेगा। एनी हाउ वी वुड गेट दो शेयर्स बैक, बट हम्म। अगेन वहां पे ना वो प्रोसेस काफी लेंदी हो जाएगा। तो अगर हम तो उसको एग्जीक्यूशन स्टेज के ऊपर ही रोक सकते हैं तो उसका कोई सोल्यूशन हमारे पास में होना चाहिए। एग्जीक्यूशन स्टेज पे आप कैसे रोकोगे? आप समझो कि आपका डीमैट अकाउंट है, मेरा डीमैट अकाउंट है, ठीक है। हाँ। थाउजेंड थाउजेंड शेयर्स हैं। तो व्हाट हाँ। हैपन, जब ऑफ मार्केट हम सेल करते हैं ना, तो ऑफ मार्केट हम्म। में आपका नंबर रजिस्टर्ड है। सो आपके पास मैसेज हम्म। आएगा, आप सेल कर रहे हो, ठीक है। बायर और हाँ। सेलर के बीच में जाएगा। अब इफ यू आर द हम्म। सेकंड शेयर होल्डर, आई एम द फर्स्ट शेयर होल्डर, आई एम सेलिंग शेयर समवन, आपके पास तो हम्म। कोई मैसेज ही नहीं आएगा। मेरे मेरे तीन बिल्कुल। हजार शेयर है, मैंने उठा के बेच दिए व्हाट्सओएवर एक्स वाई जेड प्राइस। तो आई हाँ। हैव डन इट, बट इट इज अ नॉन कंप्लाइंट। ओके। नहीं, मेरे हिसाब से आई हैव हाँ, नीरज आप कंप्लीट करिए, फिर मैं बोलूंगा। So I am saying, see, from the perspective of this platform things, so we cannot stop it. आप बोल रहे हो कि डीमेट अकाउंट ओपन करने से पहले ही हमें, अगर हम कुछ कर लें कि वो सेल ना कर पाए, तो नहीं, अगर हम आरटी को भी इंस्ट्रक्शन देके रखेंगे कि कोई भी ट्रांसफर आप जो है अपने पास में होल्ड करोगे और इंटीमेट करोगे कंपनी को बिफोर एग्जीक्यूटिंग दैट ट्रांसफर, तो अगर उस तरीके से कुछ हो सकता है आरटीए के साथ पास में इसकी पावर्स हैं, तो हम वहां पे वो उसको चेक लगा सकते हैं ना। नहीं, देखो, चेक तो आप वैसे लगा सकते हो। दूसरा ये होता है, शेयर्स तभी ट्रांसफर माने जाते हैं जब आप बोर्ड मीटिंग करके उनको टेक नोट करते हो, राइट? हाँ, ठीक है। है ना। मैंने मान के चलता हूँ, मैंने तो शेयर ट्रांसफर कर दिए अपने, 100 के 100 ट्रांसफर कर दिए। लेकिन वो हम्म। रजिस्टर्स में तो तभी आएंगे ना जब मैंने बोर्ड मीटिंग की होगी उसके साथ। व्हाट इफ बट लेकिन आई डिनाई दैट? क्योंकि वैसे आप हम्म। रोक नहीं पाओगे, क्योंकि दोनों सेलर और बायर के अपने अपने प्लेटफॉर्म्स होंगे, डीआईएस स्लिप अपनी होंगी। हाँ, आप बिल्कुल। आरटीए को आप सही कह रहे हो कि आप बोल सकते हो कि कुछ भी ट्रांसफर आएगा तो फर्स्ट यू हैव टू इंटीमेट टू द कंपनी दैट वी हैव रिसीव्ड हम्म। दिस ट्रांसफर एंड वी आर मूविंग अहेड। बट हाँ, हाँ। डिपेंड्स अपॉन कि आरटीए कितना प्रोएक्टिव है इस केस में आपके लिए। राइट। तो अबे हम्म। अबे आपका क्वेश्चन है ना ये? हेलो। नहीं, सर सर ये सागर सर, ये मेरा क्वेश्चन था। शुभम नाम है मेरा। हाँ, शुभम सागर शुभम। जी, ये शुभम जी का क्वेश्चन है। अच्छा, शुभम जी। शुभम जी, मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आपने हाँ। आर ओ एफ आर वाला पॉइंट की बात बोली थी, तो मैं इसमें ना हाँ जी। दो स्टेप्स में आपका आंसर देना चाहता हूँ। एक तो पहला मुझे ये हम्म। कि आर ओ एफ आर तभी होगा जब आपका शेयर होल्डर एग्रीमेंट है। अगर आपका शेयर होल्डर एग्रीमेंट है तो उसमें क्लियरली रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप विदाउट परमिशन ये नहीं दे सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, तब तो आर एफ आर का कंसेप्ट आएगा। लेकिन ऐसा हाँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट जनरली होता नहीं है। और राइट। उसके अंदर आपकी रिस्ट्रिक्शंस अगर आपको पुट करनी है, तो मेरे को हम्म। ऐसा नहीं लग रहा कि आप ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हाँ जी, लेकिन जब कंपनी के शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफर होंगे तो आरटीए की तरफ से एक हम्म। इंटीमेशन जरूर आता है कंपनी के पास कि दीज ओके। शेयर्स वी हैव रिसीव्ड द रिक्वेस्ट ऑफ दीज हाँ। शेयर्स इन रिलेटेड टू द क्रेडिट ऑफ पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट। तो वहां पर हम्म। कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट। ये मतलब मेरा एज पर ओके। माई अंडरस्टैंडिंग ऐसा है। तो उस स्टेज हम्म। पर आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये चीज अपने आरटीए से भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। सागर राइट, जी, राइट, राइट। टू द एक्सटेंट यू आर राइट, बट व्हाट हैपन, जो आरटीए होते हैं ना, जनरली दे विल सेंड यू अ मेल एज एन इंटीमेशन, ओके, कि हमारे पास ये ओके। रिक्वेस्ट आई है एंड वी आर ओके। मूविंग फॉरवर्ड। दे विल ओके। समटाइम्स दे विल नॉट आस्क यू कि क्या कर सकते हैं। तो ओके। शुभम जी का क्वेश्चन मैं आपको और लेमैन में एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। कि भाई, जैसे दो शेयर होल्डर है, नीरज खत्री एंड शुभम बेदी, ओके ना। कंपनी, प्राइवेट कंपनी हमने फॉर्म की है, 50-50% के हैं या 70-30 के हैं। नीरज खत्री क्या कर रहा है, बिना बताए शुभम को, उसके सबके डीमैट है, नीरज खत्री बिना बताए शुभम को, सागर को ट्रांसफर कर रहा है 30% शेयर। अब वो शेयर भाई डीमैट में है। डीमैट में सिंपल प्रोसेस है, मैं डीपीआईडी अपनी पैच करूंगा, दूसरे की पैच करूंगा, अपने अपने फोन नंबर पैच करेंगे, यहाँ से मैं अपनी डीआईएस स्लिप, क्योंकि मुझे साइन करनी है, मेरी पर्सनल डीआईएस स्लिप है, बिकॉज आई एम द शेयर होल्डर। मैं डीआईएस स्लिप भेजूंगा, डीआरएफ भेजूंगा, सर्टिफिकेट भेजूंगा। अब इस केस में आरटीए कहेगा, मेल डालेगा आपको, कंपनी को, दैट कि भाई, रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, कि भाई हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई है और हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। सेम वे में अगर आपका बैंक है, डीमैट है, तो वो भी बोलेगा कि हम ये मूव कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे कैसे रोक पाओगे जब मैं शेयर को ट्रांसफर करूंगा? ये है शुभम का क्वेश्चन। हाँ अगर जी। जैसे मेरे पास ओटीपी वगैरह आया, मैंने ट्रांसफर कर दिए शेयर, अब मान के चलो सारे शेयर ट्रांसफर हो गए। उनका कहना ये है, ट्रांसफर के पहले कोई हम ऐसा लॉक लगा सकते हैं
कि नीरज खत्री इज नॉट एबल टू ट्रांसफर दिस शेयर्स टू सागर ग्लोबल, कैसे हम कर सकते हैं? क्या हम आरटीए को बोल सकते हैं, या डीमैट या जिसके भी पास ये होल्ड हो रहे हैं, हमारे पास इंटीमेशन है कंपनी के पास दैट वी हैव रिसीव्ड द रिक्वेस्ट, और द कंपनी हैज द राइट टू रिस्ट्रिक्ट दैट नीरज खत्री कैन नॉट ट्रांसफर इट्स शेयर्स टू शुभम वेदी? क्या हम ये कर सकते हैं? तो ये दो चीजों पे डिपेंड है, एक तो आपका डीपी कौन है, ठीक है, बैंकर है, और उसके क्या रूल्स और प्रोटोकॉल्स हैं। कर सकते हैं, उसके बाद भी प्रोसेस है। आप देखोगे कि ये केसेस मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस में भी काफी बार जाते हैं कि हाँ भाई एक जी, हाँ जी, बिल्कुल ईमेल बनाया बिल्कुल। और दूसरे में चलते बने, वी हैव सीन दैट। हाँ तो जी, हाँ उसमें जी, यही है कि आरटीए आपका आपको इंटीमेट करता है या फिर आपसे रिक्वेस्ट मांगता है, दो चीजें हैं, क्योंकि हाँ जी, हर आरटीए की बिल्कुल। प्रैक्टिस अलग अलग है, टू बी हम्म, वेरी ऑनेस्ट विथ यू। सो वो आपको पता करके रखना पड़ेगा। एंड ये आप चीज मान के चलो कि सी एनएसडीएल सीडीएसएल या आपका बैंकर है, बैंकर बोलेगा भाई मेरे पास डीआईआरएफ आ रहा है, ये सब आ रहा है, मैंने ओटीपी भेजा, उसने लिंक में गया, उसने ट्रांसफर कर दिया, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? सो देयर इज नो लॉक। हाँ, आरटीए आपका ये कर सकता है कि भाई आप एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, जैसे सागर जी आप बोल रहे हो कुछ आरटीएस में है, आपने कहा कि मैं रिजेक्ट करता हूँ, तो ये हाँ जी, इंटीमेशन मेरे पास आएगी नीरज खत्री के पास दैट ओके नीरज खत्री, कंपनी ने मना कर दिया आपको शेयर ट्रांसफर के लिए, काइंडली कॉन्टेक्ट फर्स्ट विद देम एंड रेज अ रिक्वेस्ट अगेन बाय टेकिंग द अप्रूवल्स एंड देन अप्लाई। तो ये ओ, भी एक प्रोसेस है, बट हाँ जी, डिपेंड्स आपका कि क्या मतलब उसका प्रोसेस क्या है इंटरनली आरटी का। लोकल आरटीए जनरली those who hold listed companies वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। That is why I am always say कि choosing an RTA and choosing an banker as a DP you must be very very careful. That is why the session was all about कि आपको जो भी सिलेक्शन करना है ना, बड़ा पर्टिकुलर करना, बड़ा जान के करना है। वरना होता क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ठीक है, बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि फॉरेन में ही वो अपनी अपनी स्ट्रक्चरिंग करते हैं, एक्स वाई जेड को एबीसी में पलट देते हैं, उनके पास आईडी पासवर्ड आपने दे दिया, वो सीधा ट्रांसफर करेंगे विदाउट आस्किंग। दैट इज ऑल्सो द केसेस दैट वी हैव सीन, एंड शुभम has rightly pointed out that how can we restrict that, so there are 2 3 ways which I have told you. Yes. या ओके, थैंक यू नीरज। Right, All right. right, sir. नीरज जी एक मेरा So this is the last question we'll be addressing. एक मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बढ़ गई है, राइट? द कैप इज, या ठीक है राधिका, डन डन। सो नील जी, जो बेसिक हमारी कैप है स्मॉल कंपनी की वो इंक्रीज हो गई है, राइट? अब उससे पहले तो कई रिमेटलाइजेशन करा लिया। नाउ व्हाट शुड बी द मोडस ऑपरेंडी? शुड दे गेट गो एंड गेट देयर शेयर रिमेटलाइज, और व्हाट शुड बी डन इन द प्रैक्टिकल सेंस? इन द प्रैक्टिकल सेंस आपको शेयर डीमैट में ही अब रखने हैं। अगर आपने एक बार रख लिए हैं, रीमेटेरियलाइजेशन कराने का कोई सेंस नहीं है। ऑल इट डिपेंड्स ऑन यू कि पहले आप स्मॉल कंपनीज में थे, परव्यू में थे, अब आप नहीं, पहले आप स्मॉल कंपनीज के परव्यू में नहीं थे, अब आप आ गए हैं बिकॉज ऑफ लिमिट बढ़ने से। बट आई माई प्रैक्टिकल सजेशन इज दैट कि आप रहने दें। कोई भी आप कॉर्पोरेट एक्शंस करते हैं एंड डीमैट फॉर्म में करते हैं, या मोस्टली आप कंपनीज में देखेंगे जैसे स्टार्टअप्स वगैरह हैं, तो इट गिव्स अ नाइस इंप्रेशन दैट वी आवर शेयर्स आर इन द डीमैट फॉर्म। सो दे ऑल्सो, अगर उनकी जो दूसरी लीगल टीम है उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन कंप्लाइंट फॉर्म। सो इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन टू यू। रीमेटेरियलाइज कराना इज नॉट अ गुड थिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, अनलेस कि कोई ट्रांजेक्शन बड़ा है, वो इसलिए किया जाता था कि 31 मार्च पास हो गई है, बैक डेट से ट्रांसफर कर दी वगैरह वगैरह कर दी, तो उनको आप फिर दोबारा लाने में और वो अवॉइड करना, इट्स बेटर टू हैव अ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। Abhinav, I hope I have answered your question. Yes, Or you yes, want? got it. Yeah. Okay. All right, sir. So I guess that's all with the question. So thank you so much, sir. Like it's our heartily applause to enlighten you with this session. I guess we all have obtained so much of knowledge and immense knowledge on like how to dematerialize the shares and each and every stuff, whatever you have gained with us. And I would like Paritosh to please share the token of like certificate. Paritosh, are you there? Neeraj ji, I must say it was a very wonderful session, and the interaction which happened among the participants now, that was the, I can say, whole soul evidence for it, right? So I again thanks to Sagar ji, Shubham, and Abhay, that who have put in up, and where other members who have put in up various questions and made this session more interactive.
So I request each and everyone who have joined today that keep joining these kind of webinars which we are doing on a weekly and bi-weekly Definitely. Thank you, Paritosh. Uh, Thank you, Thank you, Radhika, Neeraj. and on a thank you, weekly and Abhinav. bi-weekly It was a basis wonderful on very interaction with you guys. critical topics, and we can definitely learn together and grow together. Neeraj, thank you everyone for joining, and we are coming up with many more sessions in future also. Great. Thank you, Abhinav, so much. Thank you, Radhika, and thank you all the participants who have joined. And I truly enjoyed. Generally, I provide the webinars for 1 hour, but it was extended because it was very interesting and very close to my, practice because I have been dealing with most of the companies on these situations. And yes, we'll come up with a more, sort of these sessions so that you can get enlightened because of a lot of practical things are going on because we understand the law says this thing but जब practical करने जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है so I'll try to catch up more on a practical side rather than on a particularly on the legal side. So yes, we can connect, and thank you Abhinav and Radhika for organizing such a wonderful session for all the participants. Thank you very much. Thank you so much, sir. It's our pleasure to have you. So thank you so much, participants. You all can leave. Have a good day. Thank you.